Assalamu alaikum everyone. We are back on the day 2 of the top 16 here. Uh, Ramadan Showdown. We have this match. It's the first match, by the way, and we have diversity on the defense, and we have influx on the attack. And I'm probably seeing influx for the first time so far in the community here, but I am very well aware of diversity. So let's see how this goes. Mid. Okay, interesting. A very fast mid push here. Okay. Pro player takes down Mischief. And two of the players from both the teams are down already. Look at that. Look at that. Tempest. Tempest with that spam. It did do a lot of hefty damage to our Omen though. Beautiful. He manages a pick on pro player though. One enemy remaining. There we go. Nafe with a 2k. Giving his team the pistol round. Well played by Diversity. A very fast round indeed. I mean, the way the attackers just went in for it, it was very close. So, it was a good try by the attackers for sure. Shadows traveling. That was such a nice shot by Jet there. Natsu manages to take down Abdullah with his outlaw there. That's a good pick. Okay, look at that. Riley takes on a breach. Now it seems like the attackers are definitely going to struggle without a breach here, but look at that. Tempest takes on Copy as well. The defenders, they just keep getting those picks one by one. Oh, nice there. Pro player manages to get a pick on Triley there. It's a 3v2 right now, and pro player is really, really down. He did manage to get a lot of picks for his team in this round, but I mean, 22 HP versus what can you do with that? But well, there's still hope there. 40 seconds on the clock, and we have Natsu holding the mid with his outlaw there, and there. Oh, okay. Tempest is going to be facing Mayday here. Which 30 seconds. Toa is better? Last player standing. Turns out that Tempest is better. Timing away. Pro player manages to get that pick here. Warna, he was pretty low. It almost seemed impossible for him to get that. But here, Tempest gets our pro player, and defenders get their second round as well. Spike planted. Last player standing. Flash out!
One enemy remaining. Revealing area. A bit of a mid push here by the attackers. I mean, okay, a lot of crossfire is going on here, and that was a nice shot by Triley there. One Interesting. enemy remaining. Nafe with a Spike 2K with the down sheriff. middle. He Last managed to player take down standing. 2 of the people here. Now it leaves it on the 1v1, but unfortunately, Nafe, he got a pretty hefty damage there, and then Copy just got him down with the classic there. But it was a nice try. Okay, we have a fast push towards the B side here. We have Tempest, who's pretty low, but he still manages to get their breach, which is a good pick considering they still need to enter the side. Look at that. Triley, right, hiding in the boathouse. Pro player. Can he manage to get him down there? Oh my goodness. 2 of that defenders are down. But Triley managed to get pro player there, so that's not bad at all. 3v3. I know exactly. Omen versus Omen, One enemy and remaining. Mischief takes down Spike down Copy. B. Well, it all leaves it on Natsu. Can he do it? Natsu is known to be a really good player, though. He's been radiant. He has a crispy aim, but look at Abdullah's positioning. Good thing that Natsu was able to see it. But unfortunately, the positioning that Mayday had there, it was just really unlucky for Natsu. It was pretty easy to clutch that one, but nice try by the defenders. Baki, a very good push by the attackers, I would say. Cover going out.
player standing. Spike down Scanning A. ahead. Shock dart. Thirty seconds left. Shock dart. Dusted. Okay, Abdullah takes on Nafa here. That was a very nice pick. Look at that. Tempest 30 is seconds hiding left. right behind the box. Wait. Last player They standing. were not able to see his phantom lurking off from that box, but I could see it though. But well, either way, they still got him down, so it's all good. Natsu now. Let's look at what he can do here. 1v3. There's a wire here, and two of them are in hell, and Baki Omen is there, right around the gen here. But okay, unfortunately, he couldn't do much here, and Copy takes him down with that one tap. Well played by the attackers once again. 3-5 into this, and I guess thoda timeout le sakte hain to discuss a bit, but either way, it's still too early into the match, you know. So there's a lot that could happen. So okay, so they're leaving the cipher on the lurk, and Baki jo hai, they're heading towards A here with Jet and Omen. Maybe, you know, trying to get a pick from mid somewhere. Catwalks की तरफ आ चुके हैं. Ooh, that was a nice cover by Abdullah, by the way, because there was a huge chance that pro player, you know, he could have died there because he was stunned. Okay, they got the side control. That was a pretty way. That was a nice way. We have Natsu here on the operator, and it would be a huge loss if they lose it. There you go. Nice shot. Natsu takes on pro player there. Oh no. Abdullah takes on Triley. Now it all depends on Natsu. But Natsu just did not have that particular gun that could just, you know, get him down. He had a shorty there, but he couldn't really get him there. And in the end, उसको classic से उसने मार दिया. Once again, it was a nice try, but they really need to build up some different strategy, honestly, because like it बिल्कुल end पर आकर ये लोग बेचारे जो है ना, they just lose it. And our attackers are doing a really good job with the way they just take control of the catwalks or the mid particularly, and even if they push the side, they're doing a pretty good job here.
Look at that. Nafi and Riley on the mid. A crossfire. Look at that. A crossfire once again. But it's a flawless. Mischief. Never mind. It's not a flawless. Mischief was able to take down Pro Play there with his Sheriff. That was a really nice shot. But Omen decided to diff him there. I don't know, man. They just go mid and बहुत बड़ी crossfire होती है जिसमें, you know, attackers just won because obviously the attackers had rifles on their hands against some sheriffs and a couple other guns, but so it was pretty obvious कि कौन जो है जीतने वाला था this crossfire. Let's see what they have in mind this time. A B execution with Cypher on the lurk, pretty standard. Let's see how fast it is. I mean, considering the defense ke paas rifles aa chuki hain, so they need to be really cautious now. Look at that stun, a good stun, giving them enough time to kind of just push him back a bit here. And seems like they're not going for B now. I mean, it could be possibly just a bit. Okay, they are heading towards, two of them heading towards the mid, while rest of them are still on the main with the spike. You know, look at that. Abdullah, beautiful lurk. He gets down Triley there, already at the loss, but Pro Player is down. Natsu manages to take him down there. It was a nice try by Pro Player, but look at that. Nafe is positioning. And Nafe gets made it. One enemy remaining. What is gonna happen? Look at that. Game Slayer is down. All lies on the hands of Copy. Look at that. He diffs Mischief every single time when he comes against them. That's a really, really good shot there. Look at, he's in the hell. They're aware of him. And Natsu there with a dirty shorty shot right on him. And defenders finally get their round. Achha, I would definitely say that the way Cypher and jo lurk kiya tha attacking me, I felt like that round was definitely theirs, but our defenders were just Last round before the switch. quite there for it. I mean, I already thought कि भाई attackers ये ले जाएंगे क्योंकि Cypher का lurk भी बहुत अच्छा था. ऊपर से they did get a couple picks there. I felt like it went down all the way when Nafe just, you know, took the person down near the tree there. So, well, 4-7, pretty close, not one-sided so far. And it's the last round. Either way, जो भी team लेगी उसका ही फायदा है. बाकी फिर देखेंगे कि हमारे attackers कैसा खेलते हैं defense पे. Cover going out. Look at that. Again, a mid push here. They are really good at it, so hopefully this time. Wait, Natsu is so far. Oh, Pro Player manages to get Natsu this time. I mean, look at that. Two other people are near the spawn. They're sticky. But they take the attackers down. Copy, once again, diffing. Abdullah takes down Triley. Wohi Sentinel diff ho raha hai. Wohi Controller diff ho raha hai. But now it all lies on Abdullah. Can he clutch this round? I mean, it's possible. I mean, look at that. Tempest is there. अभी थोड़ी टाइमिंग हो सकती थी अगर थोड़ा जल्दी आ जाता Cypher here. But they both are on the site here. Look at that. Tempest. I think Tempest might be able to. Never mind. I kind of underestimated Abdullah there. He took down Tempest and उसपे जो है ult कर दिए with Nafe, utilizing his ult on Abdullah alone, getting the round for the defenders. Well played by the defenders. Once again, when he took down Tempest, I had a little bit of feeling that maybe Cypher le jata. Look, considering he's like top fragging, he's a match MVP right now. That's okay. Now, this is the thing. They are going for Vice on as a sentinel on the ascent, but for me it's always Cypher. So I feel like the defenders now they have enough rounds, and if their defense is strong to pair by GG's ho jayega because Cypher on ascent is very deadly. You cannot change my mind. Better than Vice, better than Killjoy. There we go. B की तरफ execution हो रही है, a pretty fast execution, not the typical mid standard stuff. Look at that. The wires are broken. Abdullah is there right on the spawn there.
they got the side pretty easily. Nobody's there on the side. Nobody's in the boathouse. They're pretty safe, you know. They got the side now. They just have to hold it well. Now let's see how the defenders actually go for the retake here, though. Of Natsu hiding in that dirty spot. I mean, you could potentially get a pick from here. So, ये pro player को ले जाएगा. Look at that. What did I tell you? Oh no! 2 of the defenders are down. Okay. Wait, this is so close, yaar. Well played. Riley manages to do a 2K here, and that kind of gave them the pistol for sure. There was a chance, a slight chance, the defenders might have actually won this, but वो जिस तरह बहुत जल्दी से तेजी से सारे defender they went down, and the shot that Natsu did right on pro player there, it was definitely it for me. Now they're asking for a P10 here. Let's hang up, see what it's all about.
Let us hunt. Last place. Our spike carrier is killed. Spike down B. He's so short. I mean, the One enemy remaining. that Tempest with a 4K. They have the rifles. They had the guns to get this round. So obviously, I wasn't gonna think that defenders were gonna take that, but it was pretty obvious. Right here. The team was gonna take that round. So a good play, a nice try by the defenders though. But now of my defenders because they have rifles आ चुकी हैं, so let's see how it changes. And we just have 2 rifles from the attackers here with 1 Spectre and 2 Sheriffs. Blind हो गया. Revealing He's down area. here. Nazu looking for the entry. He's in. The side is pretty empty here, except we have Cypher on the boat. Nice. Spike down B. Good setup. It's something I've never seen before though. I mean, itna peache Out se of there खेलना they है. are. I am definitely gonna try that. Blocking sight. Acha tha. Stay down. Oh, pro player takes on Nafe here, and it's a 3v4 here. The defender is definitely with the manpower, and Mischief is down. Pro player One is enemy down as remaining. well. Tempest is Spike down. down, B. 1v2. Triley. It all lies in the hands of Triley. He's got the health. The others are pretty low, so there's a huge chance he can actually win this one. Let's see if Triley can do it. He gave off a sound. They know that he's coming from here. So if he gets on breach, though, like the timing with the breach, bro, breach was amazing. Oh no, angle was bad. It was very nice. I mean, the angle for a mayday was good, but Triley's positioning was really bad. He should have just gone a bit front to get the breach. Of course, he didn't know the breach was there, but breach thoda udhar dekh raha tha. So Triley had an opportunity to actually take them down, and then usko to one shot hi marna tha. Now we wait. But unfortunate for Triley. The defenders managed it pretty well this one, and there's pretty both of them are Need a giving drop. very fierce competition. Thanks. Now I'm very well aware of how Influx plays, so I kind of underestimated what they do. Blocking sight. Now with that MP5, the wires are everything, honestly. The wires are too good. Natsu is down Tempest takes on copy as well. 4v4 here. They're planting this Nafe or Spike planted. Like timing away they both were facing each other off, but then Nafe just decided to run a little bit. Then Enemy kill. player just quickly goes on to kill him. Mischief blew up with a second Tempest, and it's right there. One enemy Double remaining. target. He's down as well. All on Mischief. Deploying here. drone. The breach is pretty low, so time is ticking. They need to move forward here. He kind of dodged. They don't know he's in the boathouse now. Concentrate, Sofa. Oh no, that was a bad whiff. Well, he whiffed, but the time wasn't there, so good for him. Either way, attackers go around मिल गया, but फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पे whiff किया उसने. It was a bit unnecessary because he was planting the spike and he still couldn't manage to get that pick. Fair, either way they get the round, that's enough. बराबर situation है economy की यहाँ पे थोड़ी, except defenders are a bit in a bit more loss here. With the rifles, we have the guardians on the other side, but this time here we just have 1 phantom bulldog and 3 sheriffs. Again, a B execution here. I'm not sure. I think we need to change it a bit or something because Natsu just keeps trying for the wires here. Bruh, what is that position? That was a whiff he couldn't afford there, and it was a good shot by Abdullah there with the sheriff. He has a really good aim. His
aim is very accurate. Spike down A. Look at that. Michigan is making such whiffs. I don't know. Wall trip. He just keeps getting diffed by Owen there. So, well, either way, they are planting the spike on the A side. Spike planted. 4 Blinding trap. Abdullah being pretty low, so Launching it's not thorns. unwinnable. No Twice more as low as thorns. well, so there's that. I think a bit of a spam on the heli could actually Nafe there with the guardian shot. Last player Can he standing. get down Slayer, but he couldn't, and Slayer takes on Nafe. Now it's all on Triley, who's just barely any health. Redundant. My ultimate's ready. Takes on Abdullah. Oh, but unfortunately he couldn't take down Breach because ulti is very low, and the defenders get their round. Well played. 2 rounds in a row, I think, for them. उनकी economy थोड़ी संभल गई है, so it was a good thrifty. Kind of a thrifty, obviously. I mean, they did have one bulldog and a phantom, but either way, our attackers are pretty broke now, and they need to win. I guess they can save up this round, maybe somehow get a thrifty. If not, then they will be able to afford the rifles in the next one, so that's good. It's not bad. I mean, they're not that far off from losing or winning or anything, so it's pretty close. Pretty slow round by the attackers this time. I mean, obviously, I feel. Oh no. Try Here. Something they couldn't afford so far into the round, I would say, but either way, it's fine. It's not even their buy round. But I think Abdullah might be able to take down Natsu here. If not, Nafe. Look at that. Oh, Here. A bit off from the head, but. They're running away. They're heading towards the mid here. We have Mayday though, facing off that pretty wide angle. Look at that. Oh no, he kind of whiffs, but he deals a pretty damage to it. And Spike down mid. Defenders. Stealing sight. They're taking down Last player standing. Long. And Jet Day on the other side. Well played. 3 consecutive rounds in a row. It seems like attackers are really struggling to enter the site here, but I guess they need to take a timeout or something and come up with some different strat, honestly. A की तरफ एंट्री हो गई है यहाँ पे. We have last one nice. Hopefully kill this Tempest takes a pro player there, and it's a 4v4 now. Right into the round, the spike is being planted. All of them are on the heaven. 3 of them are on the heaven here. But Cypher is going to join them shortly. Enemy tag. Adapt or die! Riley with the ult. Ult is not really doing much here. A good aftershock. Snare based on Nafe. They know where Riley is. Going out. They know where Sova is as well. Last player standing. Look at that. One enemy Riley. remaining. Riley is down. It was. It seemed like it was pretty gonna be. I feel like Riley just kind of peeked off and died there. It was the -1 for him there, honestly, but it was really possible for him to win it. But unfortunately, the luck was not on his side here, and it's really hard for the defenders. And I feel like the defenders might actually take this one because. अब जो ये वाला round है, it's too necessary for the attackers. If the attackers lose this one, तो फिर मैं I can't really say much about any sort of a comeback anytime sooner. So crucial round for the attackers, but defenders तो बिल्कुल Let's fit crack हैं. them open. They got the credits, even if they lose this one, they got the next round. Not an issue for them, but diversity needs to do something. It's kind of going a bit downhill for them right now.
Blocking They're sight. going for the A again. They saw a bit of a potential there. Positioning, hopefully. But look at that. Look at pro player. How did he whiff that? Bro, that was such a bad whiff. Now for there, with the flash ult, by the way. So either he takes it counter, he keeps it. Hit the foot. No way. Copy is like मैं तो नहीं position change कर रहा. वो बार-बार उसे इधर ही shoot करे जा रहा है. There, 3v3. Our carrier's dead. Tempest is down. Sad. Spike down A. Good timing for the ult. He was pretty low down as well. I think they should One have let enemy him plant, remaining. But now they tell you do not take out your knives mid battle. Riley Okay. with the try, but unfortunately he couldn't do much there. Two mistakes that diversity Match point. is first I of saw all, the desperation. Spike उसे क्यों दे रहे हो जिसकी health low है, considering you know that their Sova has the ult. Secondly, why are you unnecessary dead. movements? वो आप knife क्यों निकाल रहे हो? You know, I get it. Just wanna run back a bit quickly, but अगर वो knife ना निकाला होता तो there was a huge chance कि ना फिर वो निकाल लेता player. खैर, not looking good for diversity. Influx with a lead, Cover huge going lead out. here. 4 rounds already. 5th for them in a row, and mid push हो रहा है यहाँ पे by diversity. It seems like it's end for the Here. diversity. I think. Riley, but he couldn't take down Abdullah there, and unfortunately he's down and it's not looking good. Pro player takes down Mischief. Tempest takes down pro player. Off your feet! Nafi. One enemy There. remaining. Okay, there we go. Defenders James there win. Not with one that ult left. takes down 2 of them, and the team Influx wins the round. They win the match technically. Well, congratulations to them. But with this a very well renowned team, diversity is out of the tournament, unfortunately. But it was a nice try. Khair, congratulations once again for team Influx.
भाई इसको अंदर ले जाओ, मैं बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है उसके अंदर। Second match here. Uh, well, well-renowned teams here we have on board with us today. We have Swift Esports versus Nexus here. Defending पे Nexus है, attackers पे we have Swift. It's going to be a really close combat, I would say. But वैसे I do feel like Swift could be a little bit better. But we'll get to that later on. Okay, we have seen Wise a lot this year on Lotus, so and Teho as specifically, but they have Breach as well. So I feel like they have definitely have a sort of a better combo. I would say we have Breach with Raze, we have Teho for the additional um, initiative support, and then we have Vice and Omen. But uh, I would say I think Qatar is going for a Clove here on the defense, which is uh, quite not something you would see on competitive play. And we have Viper as well. Interesting. I mean, they have the two of the initiators that is quite similar. They have the Raze as well, but Clove and Viper is a bit off, I would say. I don't remember the last time Viper been used in VCT for Lotus or something. एंड क्लोव स्पेसिफिकली काफ़ी जो है कम्पेटिटिव बेस्ड एजेंट है बंदा गेम में कम्पेटिटिव में कैजुअल खेल रहा होता है तो ले लेता है यूजुअली बट ओमन ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी कॉमन पिक इज़ अ कॉमन पिक एवरीवेयर वेल बट
here I'm interested to see how both the teams will perform, and we'll see which one actually wins it. Seems like Sift is going for the A here. We do have a bit of a splitting, obviously. We have Breach towards the B, we have Vice towards the C. Uh, Not so sure what they want to do here. Drone aa rahi hai yahan pe. Teho's drone. The two of them got detected there though. Let's see. Two of them are coming forward here. We have Raze and Teho coming all the way to front. I feel like it might actually turn out really well, or it might actually go downhill. So, not so sure. I think. Oh damn! Swift. Ayn gets a really good shot on Fiction there. I have the spike. Indeed, it makes me want to buy the Sun Classic. Hashtag Zelsis, I guess. My bad, that was very lame. Anyways, हमारे पास जो है Viper है अभी भी C पे. She kind of went back off, waiting for the team together. ये retake करेंगे, but I'm interested to see how they retake actually. Look at that. Ayn is actually gonna he's spamming the smoke. He's not going forward with it. Oh, Qatar with a nice pick on furtive. Kashan takes on Qatar though. Good trade, not bad. Oh no, Arpo is down. Oh, he gets Kashan is down as well. 2v3. Let's see what they do here. Ayn and Friday there. No, it's not looking good. It's not looking good. Oh my goodness. He did give Viper a bit of a damage there, but the aim just was not settling on to Viper there, considering uske aage bhi wo aa raha tha. So unfortunate here a bit. They did have a good opportunity though. They could have taken them down, and kyunki wo spot it's a deadly spot for holding at the C plant here, but unfortunately they died before Any means necessary. before they could the spike got diffused, so no use talking about it. Anyways, nice nades. Okay, kind of pushed them off, gave them a bit of damage here. We have Friday who's suppressed. They know about Teho, they know about Omen as well. B पे भी अच्छा इन्होंने control लिया हुआ है. बाकी side as usual we have Viper on the C, so I'm interested to see what they're gonna do, because honestly they've been really slow so far. So I don't really know how they push exactly, because it seems like the slow strategy is not working out for them. वो देखो दोनों aim इधर कर रहे हैं यहाँ पे. We have Qatar and oh nice Kashan. They bought, man. Damn, they bought. Fiction takes down Furtive, but Arpo trades him off, which is good. Not bad for Eco there on. They all bought. It's interesting to see. I mean, you lost the first round, but they went in for the buy, and Motion ki taraf se whiff. Friday able to take down Motion there with the stinger he got off from the defense. Look at that. Bang takes on Friday. Ayn takes on TG there. Now it's all on Raze here. Oh, that was a beautiful pick with the stinger there on Kashan. No freaking way. A 3k, and Arpo dies from the bomb. I feel like he got it. Look at that. A 4k and a clutch from Bang, giving the defenders a second round. Well played. I guess they're gonna give the outlaw to Viper. No, not the Viper. I feel like maybe someone who is going to hold off the A side. But unexpected clutch. I think it was unnecessary of Ayn to he was peeking it off and stuff, considering that Raze had a stinger on his hand, and Raze was pretty good. She had a shield, she had the reason shield, and she also had the health. So yeah, it's just sad. I mean, it was a 1v3, and there was a possibility for the attackers to actually win that round, but they just couldn't do it. Khair, and now they have the rifle, so
Despite their buy, they did buy 4 rifles now, and the defense is on the bonus. So यहाँ पे C execution हो रही है. We have TNG there. TG there alone, who's going off towards the CT. He's, waiting for his teams to retake once again. He's not going in for it. Spike planted. Good aftershock, right on the position where motion was, but easy to dodge, I would say. Now that the attackers have planted the spike, now it all depends on how our defenders are going to retake this. TG is there right in the smokes. He's pretty low, but can he manage to take down Ayn there though? Oh no, motion takes a furtive with a classic. Ayn takes on TG with his stinger. Arpo, motion is down. Friday takes on Bang. My bad. All on Qatar. I think it's a good decision if Qatar just decides to save the gun, but he doesn't go for it and dies. Well, doesn't matter. They got the buy for the next round. So good for the attackers. They didn't lose a lot of manpower, but it was a nice try by the defenders. Locating targets. All missiles away. My ultimate is ready. All missiles away. Blasting! 30 seconds left. Flash out! Go ahead. Stand your ground. Blinding! Spike planted. Last player standing. Okay, Kashan, there's a 3k there. He takes on Fiction. Now it's all TG, but Ayn takes him down, and the attacker win their round. Well played, 2-2, close round. It's not, as I said, both the teams are really well known, so it's obviously not going to be a very one-sided match, I would say. But so far 2-2. Defenders में a bit of an economy crisis, but I feel like they will go for the buy. Okay, एक motion rifle ले रहा है, बाकी I feel like they're not going to buy and they're going for the save. The rest, we have the attackers with a not a bad economy, and they have the rifles, so even if they lose this, they are good to go for the next one. Okay, TG, I feel like he's gonna go forward here. Ayn takes on Qatar. Already a defender is down. Look at that. I was right about TG. I feel like TG could actually manage a pick. Let's see. On the A side, we're having a bit of a crossfire here. Look at that. As I said, TG takes on Kashan, and Bang is down as well. They got the side. They're planting the spike. A good अच्छा attack. अच्छा इन्होंने किया है ये push यहाँ पे. बाकी now they just have to hold the site, and we just have 1 rifle and 2 sheriffs, so there's not much that can be done unless you're really good with the sheriff. They know about Omen. They know Omen dropped off. There was a nice try by motion with a shot, but Friday takes on Fiction. Teho diff here. Out of charges. PG with a try to get a pick. Okay, he does a little bit of damage.
but oh no. The nades were enough to take him down there, giving attackers their third round. Well played by the attackers. I feel like retake is the defenders are really struggling now. Now that they have the rifles, let's see if something differs this time. But in general, we are seeing them struggling a bit here in their retake. Viper has the Viper pit is up though, and she did it right on the sea. They're not gonna come to sea obviously now. They're still outside the sea though. Maybe they go for it. We have motion and Viper with that cross positioning. I feel like it is going to be a really bad decision if they go and sea here. So I think they should maybe rotate. Okay, they know about motion. They know about motion. They have raised with the ult. Can that ult do any sort of damage there? Let's look at that. Seems like not much. But if they're still not aware of Viper's position, man, it's not looking good. It's not looking good. But TG, as usual, he had the most 30 sighting seconds in that. Also, he takes down furtive there. Now unfortunately, oh no, Arpo takes on Bang. Not bad. To a 4v4 situation right now. Ooh, Qatar with a beautiful shot on Ain there, putting attackers in a disadvantage in terms of manpower, but they got the spike planted, so now they just have to hold it. Fiction goes in for the ult. Friday की positioning अच्छी है, I would say. They know it's a very obvious position. Somebody is going to be there. We know that. Arpo is there. They know about Arpo and they now know about Friday as well. So I feel like they could actually manage to. The attackers definitely got this one. There's no way the attackers are gonna lose this. Player standing. There we go. 2K by Kashan. And Friday takes on Qatar, giving attackers their fourth round. Well played by Sifty Sports here. The ult by Arpo definitely saved it for them. Baki 2-4, not so far. It's still quite early into the match though. But it was a necessary round for the defenders. But unfortunately, they couldn't manage to win that. So now they fall back to their savings. Now they have to save, and hopefully, it's possible to get a thrifty. We have seen a lot of thrifties so far in the tournament, so it's not going to be shocking if they get it. But seems like our attackers' momentum is so good, it's almost impossible to lose it now. As usual, we have the no Kashan usually goes on about towards the seaside. The rest of them just playing really slow. Look at that. Kashan manages to get bang there, which is a win already, putting defenders in a disadvantage. Will Fiction peek? Unnecessary peeking and unnecessary pushing by the defenders. Oh, Spike TG down, manages to get attacker Friday there. spawn. That's not bad. They know the spike is here, so. Three down. Kashan with PK, man. Kashan just got easy picks, honestly. The way they just peeked off towards the sea and gave him those picks, it's unfortunate. Just because you have thrifty doesn't mean you're just gonna push in, Fair. They got the side control. They are going to plant. Now they're just gonna hold. And what can you do with a sheriff and a marshal? So there we have motion here, hiding in that corner, while we have a Qatar. We have Qatar with the marshal. So can you get a pick on Kasha? One enemy remaining. Not ready yet. Ooh, sheesh, that's a nice shot on Furtive. I thought they were gonna let him ace though, because it was a pretty easy situation and a chill situation for Sifty Sports, but they didn't go for it. So Ain just managed to get a 2K there, but it was a nice martial shot by Qatar though. Acha laga tha uspe. He was pretty low as well, so. Gracias. Push them into the ground.
stand your ground. हमारी वाइस की अल्ट आ चुकी है यहाँ पे. They are a very strong push towards the C, and the C was TG just went off back as usual that he does. It's necessary. The defenders need to win this. Look at that. Bang and Fiction. 2 of the attackers are down. It seems like the defenders have they could actually get this one, but you know, Kashan is alive. Honestly, I can't say much. Just when I said Kashan is alive, but never mind. One He got enemy traded off, remaining. so that's a win. And Motion takes on Friday with TG getting Arpo down. Finally, the defenders, once they were struggling a bit, they got the rifles and they finally won the round after giving consecutive rounds to Safety Sports. Well played by the defenders here. Hopefully they keep it up, honestly, because you know it's not so far from tying it off and actually winning. So it's still not looking bad for the attackers, though. They got the rifles, they have the buy, so it's not a problem for them. So and now it's gonna be a pretty fair round, and it depends. Whoever takes it, it's fine, but the attackers still got the credits, so they can manage another round with rifles there. So that's a thing as well. Khair, TG once again here. We have 2 people coming at C. They saw him. He knows there are people there. I think it's gonna be another C push here. Oh, Kashan. Beautiful Kashan. He gets a pick. They're not gonna let Clove die, I feel like. Oh no. Oh, sheesh. Ayn dies from the boom pot, man. Come on. Arpo takes on Fiction as well. So, One enemy remaining. Motion. Spike Motion with down, 3K, attacker but Arpo spawn. trades him off there. Unfortunately, because he was doing really well with those picks, though. One enemy remaining. And Cutter whips on Arpo with Arpo. Stay out of my Not way. only getting a cutter, but he also gets TG there, winning the round for Safety Sports. Unfortunately, it was just a bad whiff from Qatar there. Even before that, but it seems like the mehnat, the hardship, the hard work of Motion just went in vain after Qatar whiffed it on Arpo, and Arpo just managed a beautiful 4K, giving esports, Safety Sports, yet another lead here with and fixing their economy even further. So there it's looking good for them, but a bit downfall coming sooner for the defenders with 2 rifles and a stinger. So what much can you do? But never mind, I was wrong. Bang, he just manages to get a pick with his a stinger. It's fine, and he takes on 2, kind of balancing it off more. It's the utilities were good, though. It did give them quite some damage, and could have gotten one as well if it was a bit faster, but it was good, man. अच्छी utilities जो हमारे तेहो ने और बाकी फेंकी हैं उस तरफ towards the attackers. बाकी it's a 3v4, and वही बात है, the defenders, they do have 2 rifles on them, but a stinger as well, and manpower is in the hands of attackers, so I feel like attackers might actually win this one. But look at that, we have oh no, Fiction takes on Kashan there, balancing it off. It's a 3v3. Is it going to be Safety Sports? Is it going to be Nexus? We are not so sure. They know TG's there, are they? They know. He got. Never mind. He was kind of stunned there. Good stun. Friday takes One on TG enemy there. remaining. Oh, 30 Arthur takes seconds on left. Friction. Now it's all in Qatar. He's in the smoke. Is he gonna notice? Are they gonna? Oh, now they. Okay, Qatar. Oh no, he's not gonna check Ayn. He's not gonna check Ayn. And good positioning of Ayn once again, giving the attackers the round. He got a 3K this round, so well played. Once again, he's Safety Sports taking the lead one by one, round by round. They're getting further and further away. Defenders really need to take a timeout or something and maybe plan something out, honestly, because the last round जो उन्होंने खोया है ना, उसके बाद से they're in a bit of a trouble here, so they need to do something.
Okay, slowly, Safety Sports is making their way towards the C side here. We have Omen, we have Wise holding off the Sentinel, holding off the A side here. We have Omen for the B, because usually we have seen Nexus kind of pushing off from the C and the Bs here. So, well, two of them are here holding off at the B side, while the not so sure where Swift is going, but bang, once again, the initial picks that he gets are really, really crucial. And it was a good pick as well. He's really good at it. Oh no, Arco, can he see? Oh no. Motion की वहाँ timing हो गई with the 30 seconds utilities, left. but even Fiction couldn't trade him off there, and Friday takes down Fiction there. So already हमारे defenders not gonna win this, I can tell. It's not looking good for them. Okay, never mind. It's even more obvious, which never mind, nothing. It's pretty obvious so far. One We have enemy Furtif remaining. going in for the peak, takes on Cutter. PG, a classic pick, not bad. And another pick, but in the end gets traded off. But Friday, it was. I feel bad for TJ. He's doing Last everything for his round in team. the half. Rest of the teammates, by the way, Then are what you still got? negative. It tells you a lot. The controller is trying his best to do something good. Decision timeout was very necessary. Hopefully we see something different in the attack from them, because honestly they don't seem to be doing that well in their defense. So let's see. I mean, Sift is pretty fired up. They got the energy. I mean, look at, okay, we gotta talk about Furtive. Why is he's right at the bottom with 4 He's the only one who has negative KD, but it's okay. So it's fine, it works, not a problem. Rest timeout. Let's see if something changes. If Swift gets this round, I feel like it's gonna be hard unless your attacking is really good. But so far, Swift Esports is doing a much better job at conquering here. Fire in the hole! Oh my goodness, TG ignored Raze, and Spike down. like C. he kind of let Furtif pass on when his ult got got the spike. he used up his ult. He didn't really do that. He wanted to do a little bit of aim discipline, but in the end he did get a pick, but he dies off there. Sift has the side, but nice ult. Teho, okay, a counter ult there. Bruh, Ayn ki position was so nasty. 3v2. Feel like the potential is there. Sift could actually take this, but Spike planted. plant ho gaya spike. They went in for the B. Oh gosh, One is enemy nasty. Look at that. 2K. Okay, they know he's there, and oh no, Friday just comes in from the back and gets them. All missiles away. Unfortunately, Nexus loses this one, Switching and sides. Sift Esports right on top with 6 rounds ahead is finally on the defense now. Let's see how they go on about defense. If your defense is strong, it's an attack-sided map though. So if Nexus is better on attack, they have unlimited rounds here, so they could do a lot. They need to win their pistol. They need to win. Locating targets.
Okay. Kashan takes on bang there. Ain with that whiff there. It was a good ding though. Fiction takes him down instantly. Attackers 3v3 is a very possibility that Swift could actually take this because Hamare Fiction is pretty low, so uh, anything can happen though. Can't say much. They're going in slowly. I think this nade could actually give him pretty hefty damage there. Agar he doesn't dodge it. Okay, never mind. There you go. Furdiv. He gets traded off there. 2v2. Last player Arpo. standing. There we go. Arpo and Arpo with a 2k. Well played by Arpo there. Gets them the pistol here. I saw a couple chats. We have live supporters. We have fans supporting Arpo. Arpo is the GOAT for sure. Defenders, I feel like up comeback karna is really hard, honestly. 310 here, and it seems like it's not really going to be easy. Launching form. Okay, attackers going in for the B here, leaving Viper on the lurk. A pretty standard thing that people do here, but koi baat hai, it's like a 310, a huge margin there. I feel like they can't win this. They really needed to win the pistol, so looks like Sif might actually take this one. Quite one-sided ho chuka hai. I was not expecting it honestly, but they haven't gotten a single round since so many couple consecutive rounds we've seen by Sift here. BK outside, they have stacked up. Nobody's okay. We have Omen there watching. I feel like Ain has potential to get so many picks there. अच्छा यहाँ पे Friday भी आ चुके हैं. They know they are going for it. Now they know the positioning of Ain though. Okay, they opened the door, they went in for the C. Okay, not bad. They kind of made the wall go off. Kashan is there though. Kashan is a really good aimer. He's top of his team. He's the match MVP. I think 30 seconds they are in trouble. Nexus is definitely in trouble. Arpo there. Friday. 2 of the attackers already down. Okay, trade off ho chuka hai yahan pe. 3v3. They got the guns. Potential to win actually. They got the Guardians. They got the Bulldogs. They got the... One enemy remaining. Sheesh. Cutter. Look at that. Cutter with a 4k with a judge. That was nasty as hell. And here they got the 410. They got one round though, but seems like I feel like maybe defenders might buy a bit something, but I feel like no, they won't. They got the guns now. Attackers have the potential to win this round. If not, then come back to बिल्कुल भी नहीं हो सकता. 410 eh? If maybe if the attackers actually gets this round, there's a huge possibility they could make a comeback. But it's a possibility though. It's not necessary it's gonna happen. Look at that. Defenders are pushing off. This is a good thing, you know. It kind of scares them off. Look at that. I just did not expect them. Oh, it's Friday's ace. It's Friday's ace. Bruh, they stole his ace. They stole his ace, but it's okay. देखो यही चीज that was lagging behind from the Nexus esports is when you get on your save round, when you get on the sheriffs, just sheriffs or just classic, just ghosts, you can do the utilities plus just kind of push them off. यहाँ पे नेड और यूटिलिटी से इतनी डैमेज हो गई थी कि they just had to come peek and give one taps on their bodies literally to get most of the team down. Well played by Sift. Now they got the guns and दोनों की तरफ हमारे पास guns नजर आ रही हैं though, and comeback तो अब नहीं हो सकता. It's pretty obvious which team is gonna take this one. Oh my goodness. One of the attackers is already down. I feel like they will push here. They are going for it. They are going for it. We have Furdiv there. Qatar, we have 2 of the people. Motion, Furdiv, we have Fiction. Ye double peek padegi se. They know Furdiv is there. Good stun. They're not gonna go for it.
Unnecessary to die. No need to give them the peaks. Just go. Clear up attackers. They are going in for the C now. Then we got the info that they are going C. That defenders are very well aware where they're going though. Why is Hamari Kashan a very deadly man right there? Grenade is live. Okay, stun, good utils. They have entered the side. They got the control of the side. I'm kind of the Kashan kind of gave them the control, honestly. Speaking, now they're gonna go for the retake. We have defenders Alto. Oh, bang. Kashan All whiffs. missiles away. Bang. Look at that. Good utilities. Ain almost got stuck up with those nades. Friday. Friday gets some motion there. Fiction takes an Ain. enemy Oh remaining. no. It's not looking good now. All on the hands of Fiction, but we have the man himself, Arpo, with a cool 3k takes on Fiction, putting Team Sift Esports in a further huge uh, lead, I would say. 4-12, a very one-sided match here. Match point for them, honestly, and हमारे पास attackers के पास they can't do much with it, honestly. You can't make a comeback from here. It's almost impossible. No peeking. Shadows traveling. Got one. Seems like it's the end One already. enemy remaining. Ain there with the outlaw. down A. Now it's all Kashan is down, but Fiction trying his best. But in the end, Teho Def ho gaya yahan pe, and Sift Esports win with a huge margin on the line. Congratulations to Sift Esports, and with that, Nexus is eliminated from the tournament. Nice try by coming all the way to the top 16 is an achievement itself, but it's very unfortunate. Fair, well played by both the teams.
जी हेलो सज्जनों ते बेलियो मित्रों ते सहेलियों की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक भाई अल्लाह और ये भी ना चल नहीं है। चल क्या चल बात पूछ है मैं एक स्ट्रीम टाइम वालों से पूछ रहा हूँ यार कैसे स्ट्रीम वाले यार तब तक बोर तो नहीं हो गए यार कब से वेट कर रहे हैं यार मैच का यार वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से, बट हम कोई नहीं हो टेक्निकल मैच स्टार्ट होता है। होता है हो गया स्टार्ट यार होता नहीं हो गया है बस बहुत वेट कर लिया एक साइड ने तो सारे अपने एजेंट सेलेक्ट कर लिए एंड दे आर रेडी टू। दो इनिशिएटर भाई नाइस आज पूरी साइड उठाने का इनका टेंशन शौक तो है लेनी नहीं है सिंगल डूरिस के साथ जाएंगे, 2 इनिशिएटर, एक वाइज और एक एस्ट्रा। पूरी साइड उठाने का इनको मतलब जाके लेट्स गो ले बूम 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 जिंगल वाला टीम फुई कॉम्बो है टीम क्या कॉम्बो खेलेंगे ये मुझे लगता है जिंगल वाला फुई फुई करेंगे अंदर जाके। चिंगा लाला वही वही ओए मुई चिकी पुई आई थिंक किसी का टेक्निकल इशू आ रहा है उनके एंड से, तो शायद मे बी टॉच हो जाए। नेवर माइंड। यार मैं अपनी दादी को खिला सकता हूँ इन टूर्नामेंट्स में क्या यार क्या भाई क्या मतलब दादी भी आपसे अच्छा खेल लेंगे, आपको पता है। 5 स्टैक करूंगा अपने नाना नानी के साथ ले बाबे उनकी स्ट्रीक वो उनकी हो गई ये बैक टू बैक दादा मिस है दादा डैश मार रहा है जेट की है ओ भाई दूसरी ओके, साइड दूसरी एक तरफ इनिशिएटर बीच। एक इनिशिएटर दो फिर डूलिस्ट के साथ क्या फिर बात है रेडियंट पक्का है फिर दादी 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 का रेडियंट ले दादी ब्लैक रेडियंट है बचपन से थी अच्छा रेडियंट 69 है। दे सीएसगो उन्होंने अब बनाई थी पता नहीं आपको क्या बात है। बस इन लोगों ने क्रेडिट छीन लिया था जैसे वो प्रॉपर्टी नहीं छीन लेते कजन वगैरह सारे वैसे इन लोगों ने छीन लिया था मैं क्या कहना चाह रहे हो, आपकी दादी सिंपल से भी ज्यादा अच्छा खेलती हैं। सिंपल यार छोड़ सिंपल तो वेरी स्मॉल चीज नाइस। उनकी दरअसल वो थी ओनर थी डैम। स्लेव था दरअसल वो यार मेरी वो दादी नहीं का ओके मैं जरा फुल कर लीजिए स्क्रीन क्या बन रहा है डिफॉल्ट जा रहे हैं एक की तरफ एग्रेशन आएगा, देखें जरा क्या करते हैं। ओ 1-1-3 खेल रहे हैं ये लोग रोन दरअसल रबल की तरफ है Night night. ओ वाह क्या पिक निकाली हमने भाई पिक निकाल लिया Spike down A. 3K विद जेट। ओके, ओ वाह और ये 4K। नेवर डिफेंडर्स माइंड, ले गए भाई डिफेंडर्स ले गए इस बारी लेट्स राउंड गो वेल प्लेड यार मैं छोड़ डाला। विदाउट सिंगल डेथ भाई विदाउट सिंगल डेथ वेल प्लेड और मेरे ख्याल से डिफेंडर्स का सेव जाएगा भाई करेंगे फोर्स जाहिर सी। हाँ फोर्स का कुछ कर रहा है। आइस हो जा रहा है सिर्फ टिल्टेड टावर्स क्या बात है भाई इसका प्लेन किधर है क्या मतलब यार मेरे दिमाग में वो चीज आई, बट काइंडली इस पे मैं वॉइस का गेम प्ले देखना चाहूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग पिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक है लोटस पे वॉइस का गेम सी की तरफ दो हैं देखते हैं स्टेप ओमन कर के पास पाते हैं। घोस्ट है वॉइस ने निकाल ली वॉइस के पास फैक्टर है नहीं Got concealment. I needed concealment. क्या हुआ कौन लाइव हो गए बी की तरफ से गेट खोला गया जेट बिल्कुल 1 एचपी भाई जेट की हेल्थ ओ माय गॉड आई थिंक क्या ये ओमन क्लच कर पाएगा, पिक ले पाएगा 1 HP की? नेवर माइंड। क्या बात है आई थिंक अटैकर्स लेके जा रहे हैं ये राउंड अपने ब्रीच विद आई थिंक ये Last player standing. ब्रेक विद अ स्ट्रांग वेव। 1 एचपी जेट क्या कर पाएगी ब्रीच भी 1 एचपी जेट भी 1 एचपी लेट्स सी आई थिंक Tilted power. ओमन
than that. लेकिन नहीं अपना बीच अटैकर्स का एक बंदा डीसी हो गया। रेस्ट टाइम आउट आएगा, लेट्स सी। साहिल पीटन अलाउड है? ना पीटन नो लोड नहीं है वैसे टाइम। चैट में लिख रहा हूं मैं फिर। हाँ पीटन नो नो लोड पीटन, नहीं है। ओनली टैक्टिकल टाइम आउट्स। या दैट बिल्कुल। लगता है इस आइसो को मेरी तरह का एक सेटअप चाहिए है। रिकनेक्ट हो गया आइसो अपना। अबे आइसो है, मेरी दादी वाला सेटअप चाहिए आपको? 2 सेकंड में वैलोरेंट ऑन होती है। प्रोग्राम नंबर थी मेरी दादी बहुत बड़ी। M.2 में आया हुआ पहले ही M.2 थीम, क्या बात। यस ब्रो यस। तो टीम क्या कह रही है? पीटन ओके रेडी। सी की तरफ एग्रेशन भाई, डेडलॉक। ओह फ्लैश। नाइस नाइस पिक बाय जेट। Here. क्या बात है, ओमन और जेट की डब्ल्यू भी मिनटली। ये लोग शहरी से क्या और कर पाएंगे भाई। जेट ओह नाइस फ्लैश। ओके क्या बात है, ओमन एंटी नाइस शॉट बाय अस्टा। ओए ओके ओके नॉट बैड नाइस पिक। Blocking sight. जेट का फ्लैंक है, जेट का फ्लैंक है। One enemy Enemy remaining. kill. लगता है नेक्स्ट पिक भी जेट लेके जाएगी। 1v4 सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। जेट कुक कर पाती है कि ओह ओके। नाइस प्योर्ड बाय जेट। गुड ट्रेनिंग मोर जेट यू नो। बाय द वे इधर आपकी लाइक क्या वो क्या करती नबील? अब कह रहे थे जिक्र करे थे अपनी दादी का। एनीवे कोई भी बंदा जो इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहा है वो कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं कभी भी उसे अपनी दादी की क्लास से भेज सकता हूँ। ओहो मेरा एक अंकल भी था जहाँ चलाते थे। अच्छा बस पेरिस में चला रहे थे जहाँ, पता नहीं क्या हुआ उस दिन यार। दादी का क्या रैंक है? दादी मेरी यार क्या बताऊँ आपको। इस दादी की बात कर। दादी का क्या रैंक? ओहो बाबू की पिक भाई। डेडलॉक भाई। इसने क्लासें ली हुई हैं बाबू ने, ये फील आ रही है। ये जेट की पिक। बाबू भागते हुए बाबू बोल रहा है पकड़ा गया। जाना यार किचन गया स्टार्ट। नाइस पिक नाइस रेड। ओ तेजो ने पीछे से दिया वार, बैक स्टैप किया तेजो ने, छुरा मारा One बैक। enemy remaining. ओके एक आखिरी ब्रिज बैठा हुआ। नाइस पिक पे ब्रिज। क्या ब्रिज 1v2 कर पाएगा विद लो हेल्थ या फिर ओप सेव करेगा? पेशेंट दे दे वहां से। One क्या होता है? enemy remaining. ब्रिज कुकिंग बट डिडंट कुक। ब्रिज भाई कुक कर गया था ऑलमोस्ट। इसकी जगह पे मैं होता मैं ओप लेके भाग जाता। ग्रेट भाई। आप तो रेडियंट प्लेयर हो यार, आपसे क्लासेस लेनी यार चाहिए। क्या करें यार। क्या वो भी तो आदत ने अपनी दादी से गेम सीखी है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ओप चलाता था। अब मैं वो वेट तो आप कितनी, आपकी क्या एज है अब इस टाइम? तो कोई 17-80 साल। अभी अप्रैल नहीं है और आप अप्रैल फुल मना रहे हैं। क्या बात है, सी की तरफ ड्रिफ्टिंग जा रही है। ओमन की तरफ से फ्लैंक, ओमन की तरफ से फ्लैंक बहुत रेयर होता है। ओह नो फ्लैंक पे मारा गया ओमन। अब इनको 2 बंदों का फ्लैंक एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं? टिल्टेड टावर बी साइड के ऊपर बॉम्बास्टिक साइड। ब्रिज क्या बात है, अल्ट में ले गया साइफर। Spike down. C. ब्रिज 1v1 विद ब्रिज हो रहा है। लेके गया जेट को। ओके नाइस पिक। जेट वही नाइस निकाली जेट। ब्रिज क्या करता enemy है? remaining. ओ ब्रिज विद अ शॉट। Flash out. 1v2 कर पाएगा उनका? 1v3 आई मीन। ये 3 है मेरी जान। Grounded. ओह ओके जेट कुक करेगा।
मे बी जेट ही राउंड निकाल दे cause मुझे तो लग रहा है आई एम नॉट श्योर बट ओए ना भाई ब्रीच विद देन ब्रीच में ए, जाके बॉट। उसकी दादी याद करा दी फनी जोक मारा यार, हंसो यार प्लीज। प्राइम तो भाई बहुत ठंड हो रही है यार, हंसो हंसो। बैड लाइफ खैर चलो सो गेम की तरफ आ जाए। ओहो डिफेंडर स्पॉन क्या हो रहा है? आइसो और डेड लोग ये क्या हरकत है? नटी नटी फ्लैश बाय ब्रीच। आज तरह तुम दबा के भागते हुए बैक साइड। ओ भाई उठा ले उसको। आइसो तो भाई अब प्रोग्राम बढ़ गया आइसो का। पिंच हो गए, पूरा पिंच हो गए। Headshot. नाइस किल। भाई जेट विद शार्प नाइफ शूटिंग, फिर जेट बढ़ गई। बट मीजू भाई विद एन ग्रेट ऑप। Last player standing. Spike down. द ब्रीच Team Ace. नाइस ट्राई जेट भाई यार, नाइस ट्राई। वो जो गोल्ड है ना वो बहुत प्यारा है। इस वक्त उनकी डेडलॉक का टिल्टी टावर बना हुआ है। देखो उनकी डेडलॉक क्या करती UIB है। fam. Going to Astral to do them 141। Astral. 4 अल्टे हैं डिफेंडर्स के पास। ओहो एक की तरफ फुल डब्ल्यू गेम होगा। मेरे ख्याल से ब्रीच और व्हाटएवर दिस मैक्सिकन ब्रो इज दोनों टीमें एक की तरफ एग्रेशन डालेंगे, देखें। अपना तेहो कोलंबिया का है? देखो मैक्सिकन है मे बी। टिल्टी टावर आई थिंक मैक्सिकन है। हां मैक्सिकन। बेचारा बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाता। और बॉर्डर क्रॉस करता है। ई पे फिर एक जना, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सी कुछ नॉट श्योर पिक्स पे खेला जा रहा है भाई, पिक्स पे खेला जा रहा है और एकदम सेपरेट खेल रहे हैं। ए डबल पे आइसो की मौत वाकई हो गई है। देखो क्या सोचते हैं अब। ट्राई में भी अभी भी डर रहा है। जेट एग्रेशन शो करते हैं देखो। टिल्टी टावर्स की आत्महत्या दे। वो बी साइड पूरी क्लियर है जेट के लिए उनके। टाइमिंग नहीं, वॉल ट्रिप अभी तक नहीं हुई। एस्ट्रा आ रही है, एस्ट्रा बी की तरफ आ रही है। ब्रीच भी आ रहा है। वापस मुड़ गए यार। ओके आई थिंक इनको वॉल ट्रिप कर देनी चाहिए थे मौके मिलते ही। किधर जा रहे हैं मोमन भाई? बी की तरफ टीपी करते हुए। स्टाना तो है ब्रीच का। 30 seconds left. नाइस प्ले। क्या हुआ? एक साइड क्लियर करने का बहुत अच्छा मौका है, No charges left. लेकिन पीछे से काबू Spike कर सकते हैं down इनको। B. हां तो थैया होने लगा यहां। स्टन, ग्रेट स्टन बाय ब्रीच भाई, ग्रेट स्टन बाय ब्रीच। Last player standing. ओके 10 नाइस seconds ट्राई। left. उनका ब्रीच कुछ पर है, ब्रीच अभी तक स्पॉन जो इको फ्रैग ही होंगे इस टाइम। एग्जिट फ्रैग, सॉरी माय बैड। क्या हो पाएगा देखते ओह लॉर्ड। पे पे काटते हुए ब्रीच गेट द अप ब्रो। उनको भी नहीं ऑफ मिली, ना इधर ऑफ मिली। ऑफ डूब गई। वेस्टेड पोटेंशियल। खैर मिजू के पास और भाई आगे, मिजू ने एक और ऑफ ले ली। भाई साथ छोटी भी भाई अब मांगनी चाहिए भाई। तो मांग लो। छोटी तो आदमी होती है ना, आई मीन छोटी। छोटी या छोटी दोनों चाहिए बंदों को। Are they asleep? बेसिक नीड। हाँ ए पुश फुल एग्रेशन। टीपी बाय ओमन, फ्लैश बाय ब्रीच, शील्ड बाय आल्सो। नाइस टिल्टी टावर एक दफा फिर। साइड को बॉम्ब करते हुए। फनी जोक मारा यार मैंने। ठंड हो रही है हंसो हंसो। रिकवरी से नाइस शॉट, रन ट्रेड निकालते हुए बहुत प्यारी। ओह ये ऐसा को गुब्बारा बच गया, आस्त्रा का स्टन हो गया था। तो डरलॉक गॉड सी। नाइस। ओहो क्या ही होगा भाई, क्या ही Last होगा। player standing. इस शॉप पे 150 रुपया। मजे की बात डरलॉक ने सी क्लियर कर दी, बट स्पाइक स्पॉन में ही है अभी भी।
वो पुकी वेंडर ये मेरे ख्याल से ए स्प्लिट का सोच रहे थे। That's why उसको they went उनको with, साउंड क्या साउंड करेंगे चली गई डेडलॉक? होगी। हाँ ये पे प्लांट है और डेडलॉक की अल्ट है, विनेबल है। आई 30 थिंक जेट seconds को आवाज left. आ गई उनके प्लांट की। हाँ पास रोटेट कर गए हैं। देखो मिजू अपनी Spike कार planted. मिजू ने वो फेंक दी अपनी। दोनों फंस गए। यहाँ पे अल्ट हो जाती है, वही लेट कर दिया। एक आ ओके गया। नाइस Last player standing. नाइस। डब्ल्यू क्लच भाई, डब्ल्यू क्लच। ओबीए सेव कर सकती है अगर ये चाहे तो, वो पड़ी हुई। बट W clutch. एज एन अटैकर आई वुड नॉट रिकमेंड। मैं भी रिकमेंड करूंगा। नहीं नहीं, अभी आप पिछले राउंड कह रहे थे वेस्टेड, क्या ऑप क्यों नहीं उठाई लास्ट राउंड में, वो क्या था सर? वो Try पे भी सबसे मतलब कि like डर आता है, डर ही I don't know but clutch अच्छा किया। क्या क्या हाल है? एज एन अटैक प्लेयर Sound ऑफ sensor करने out. चाहिए Over there. Over there. मैंने बड़े लोग Over there. देखे। ओ बी का क्रेशन आएगा, वो ए की तरफ जाएंगे, ये यहाँ से बी का क्रेशन, क्या बात है। फुल फ्लैंक भाई, फुल फ्लैंक। अपने टीममेट को ही ग्रैबनेट करते हुए क्या ही बात है टकराए बेबी की। ऐसे प्लेयर चाहिए मुझे अपनी गेम में। क्या बात है, ये फुल क्लियर इनको मिल गया। 5 के 5 फ्लैंक, 5 के 5 फ्लैंक। क्या ये 5 फ्लैंक स्टार्ट करेंगे? हाँ। Making cover. देखते हैं या फिर डेडलॉक क्राई बेबी के कर 5 पाता किल है। है या फिर क्राई बेबी मरेगी। एक काम तो होगा। क्राई बेबी भाई क्या बात है। ओ नाइस ट्रेड बाय एस्ट्रा। Nice kill by Mizu once again. ओमन इक्वलाइज करते हैं, दोनों ही ट्री हैं। ओमन को ये स्ट्रक नहीं है। ओह remaining. ओहो मिजू बिग मिजू for the 4K। क्या ही बात है। टर्न कर दिया भाई पूरा मैच मिजू अकेले बंदे ने। ओ वो क्या ही बात है इको भाई, जीत क्या गई है Thrifty. Nice carpet. यार। इजू इज ऑन फायर You गाइस। got nice speed यार। बात। मिजू जैसे बंदों को मेरे साथ आना चाहिए कौन के लिए। Like आप अपनी दादी के साथ नहीं खेलोगे जाके यार, वो तो रेडेड नहीं है। यार, दादी मेरी रिटायर हो गई यार। तो वो उन्होंने कोच मेरी जैसे करा इतने सकती है ना, वो आपको कोच इतने ट्रेन किया ना। उनमें टेंस भी आता होगा। टेंस वो मेरे दादी के पाँव धो के पीता था, मुझे भी याद है। Retrieving thorn trap. क्या बात। Launching thorn. मार सकते हैं ठीक है यार। और मेरी दादी को पता दादी कौन थी मेरी? कौन थी? None other than Flitz. यार ये तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट की बात है यार। बहुत प्राउड यार शायद नहीं Okay, they are pushing. बी पुश हो। ओहो Blocking vision. W एंट्री बाय ओमन जेट। हर तरफ होगा। Finish that fool. इको खेला जा रहा है। Good peek. ओमन के पास छोटी है क्या? ये छोटी है छोटी। ओहो ओ वेस्टेड छोटी। Nice peek. Spike down B. मिजू One enemy remaining. ओके मिजू मिजू भाई राउंड टर्नओवर प्लेयर है, राउंड टर्नओवर प्लेयर। मिजू इज कुकिंग ब्रो, मिजू इज कुकिंग हार्ड। मैंने देखा नहीं, मैं बाबू था but मैंने expected You नहीं get a किया। pick. We move in. But nice Got it? peek. यार 3K Free Can you kill expect that? also did, sorry but ये it's okay, यार skip. अफ्तारी हो गई Skip है, करना चाहिए था। भूख लग रही है यार। फिलिस ब्रो खाने को दो यार कुछ। क्या हाँ, काम करी, Fritz का। नोटिस जाके बना लो मेरी जान, मैं भी वही खा के हटाऊं। अरे यार खाने ठीक यार। यार मुझे It's you. ओके आइसो का देखें जरा। आइसो गॉट जेट। Okay. नाइस पिक बाय आइसो। नाइस पिक बाय तेहो। तेजो या तेहो है, मुझे नहीं नाम पता। तेजा। ओ Oh, माइंड गेम करके वो। इन्होंने ऐसे ही होल्ड कर लिया। ऐसे डिफेंडर्स के पास 4 अल्टे हैं और उधर भी 3 अल्टे हैं अटैकर्स पे। शोडाउन होने वाला है अर्ट्स का, मुझे लग रहा हाँ, maybe. है।
सबसे पहले तो आएगी वाइस की अल्ट, यहाँ तक मुझे लगा। क्या बोला था मैंने? ओए होए होए कुकिंग। भाई साइड तो पता ही नहीं चला, दो प्लांट ओमन कुकिंग, ओमन गोइंग फॉर द नाइफ बट विफ्ट हार्ड। ओमन भाई टेंशन ना लो, मैंने बहुत विफ्ट किया नाइफ पे। My territory, my rules. अपनी ही टीम को। One enemy remaining. Last 4K बाय रोन भाई ते हो, बट द 4K वाज क्या कहता हूँ, जो भी कहते हैं। last अच्छा round. जेट कह रही है मलिक टेंस, मिजू फुल लॉक इन है, वही फुल। जी जी हम भी मिजू को ही देख रहे हैं विद द 3K एवरी राउंड। कुकिंग फॉर रियल यार, फॉर रियल। खाने पे चले फिर। मेरी अगर दादी बीच का में- सारा किया जा रहा है। तो दादी को लेके बैठ जा अपने को। हमारी दादी तो वही ग्रेट ही है। जी तो पाकिस्तान से ली थी ना। क्यों भाई प्लीज, जी तो पाकिस्तान से आया था ना। यार वैसे इस टाइम जी तो पाकिस्तान के शोज में चलो जो भी है। या तो भाई एक और मौका दिया जाए। Lucky sight. इसी तरह साइड का करते हैं हम, खोलें साइड, खोलें, खोल दी साइड। कुछ हो रहा भाई। मिजू फ्लैंक कर रही है और बीच कैसा देखो, बट सी की तरफ फुल एग्रेशन है। ओमन भाई पप्पी देने जा रहे हैं पीछे से, नेवर माइंड पप्पी नहीं दी गई। एस्ट्रा भाई 1 HP एस्ट्रा भाई। बाबू भैया कुकिंग, बाबू भैया कुकिंग हार्ड। Last player standing. ओह ओह ओह, बाय बाबू। के मिजू फ्री लोन वुल्फ भाई सी पे 3K ओह। के साथ हैं, 1 HP 3K। ओ नाइस ट्राई भाई, नाइस ट्राई। 8-4 होते हुए Switching यार sides. आता थैया कौन है, कौन है, कौन है? मिर्जा भाई आए हैं यार, बड़े लोग कास्टिंग में आए हैं यार। मिर्जा भाई बिग फैन। You follow. मिर्जा भाई आपसे सवाल है यार। यार वो शॉट हो गया क्या और तू भी यार, गया? बता, क्या बता बात है रहा यार। क्या यार, लाइक यार। हमारी कास्टिंग की क्या ही बात है, क्यों बॉयज? मिर्जा भी डर गया। यार ये बताओ, पास्ते के लिए अपने छोटे भाई को तुम लोग मार देते हो कि नहीं? हेलो हेलो क्या यार, मतलब? मार दे जल्दी, भाई मैंने को मार पास्ता दे। खा लिया उसने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना? नहीं यार छोटा भाई है यार। हाँ यार चलो माफ कर दिया, माफ कर दिया यार, चलो क्या यार। नबील की दादी कास्टिंग करने पे आ गई है, ये देखो। हाँ नबील की दादी का वेट करें कास्टिंग। क्या मतलब? हाँ रुको मैं बुलाता हूँ। वेट दादी तो मैं ही हूँ। हेलो ये तो पुट्टी मुझे बच रही है। वो मार फिर भी बोल गया, गया। मार भी गया। अरे हेट माय सेल्फ यार। WNT पे भी एंट्री होगी। ओहो ओमन फ्लैश ही करता रह गया। सी की तरफ फुल कमिटमेंट होते हुए, सी पूरा खाली छोड़ा हुआ है। बाबू भैया आगे दी पे। रोन के लिए बहुत ग्रेट स्पॉट है। आइसो फुल फ्लैंक आ चुका है पूरा। बट जेट इज ऑन द लर्क, देखते हैं जेट पिक कर पाती है। ओहो नाइस शॉट बाय जेट। ओके 3v3 30 सेकंड पड़े हैं बॉम्ब के एक्सप्लोड होने पे। नाइस शॉट बाय वाइस। नाइस शॉट। One enemy remaining. वाइस विद द 3K। क्लीन वन टैप भाई, क्लीन वन टैप। Speak up and ask questions. वन टैप्स। अपने वन टैप डिटोल को साथ लाती होगी, इसलिए वो इतने क्लीन है, हैं? यार इसने भी आपकी दादी से ट्रेनिंग ली, क्यों नबील भाई? ओह फॉर रियल यार, फॉर रियल, फॉर रियल। अब ये नहीं कोई और किसी और से ली हो इसलिए। दादी लेजेंड है, लेजेंड है। अच्छा मतलब कि नबील ने किसी और को ट्रेनिंग दी है, अपने यारों को नहीं दी ट्रेनिंग। सही है नबील यार। जी मैंने खुद ट्रेनिंग ली है। हाँ इसने तो पैसा छापा होगा। क्या? उंगलियों से डंबल उठाते थे हम, उंगलियों से डंबल, 10 किलो के डंबल उंगलियों से। ओमन भाई विद द छोटी क्या, लेट्स सी क्या कुक होता है। देहो की पिक आते हुए स्कैम हो गया यार वो- बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2025। ग्रेनेड किया जा रहा है ट्री के अंदर, 1 HP वाइस इनकी।
Here. नाइस 50 टावर एक और चीज एक्सप्लोर करते हुए ये कब आ जाएगा भाई जैक्सन टेल्टे टावर क्या करता है? 1 HP वाइस पिक करेगी अभी तक कहाँ प्लाट नहीं हुआ। Enemy remaining. इसी का इंतजार कर रहे थे वो लगता है हंट का, हाँ हंट कर रहे हैं वो उसको। देखते हैं आइसो कुक कर पाता है। ओह Nice try by ISO. W क्रॉसओवर They think they're so एक तरफ एवेंजर secure. एक तरफ मार्वल्स कौन जीतेगा एक तरफ एवेंजर एक तरफ मार्वल, भाई एवेंजर्स मार्वल का ही है। हेलो एक तरफ यही तो लोग नहीं समझेंगे मार्वल एवेंजर्स एक तरफ डिज्नी आप पता नहीं कौन सा मार्वल एवेंजर्स देखते मेरी जान। एवेंजर्स किधर है? एवेंजर्स इधर है, एवेंजर्स हमारे अटैकर साइड पे हैं अटैकर साइड में मिस। अच्छा मिस और डिफेंडर्स साइड पे हमारे सारे सेफगार्ड वाले हैं सेफगार्ड सेफगार्ड वाले यार, सेफगार्ड वाले कार्टून बड़े मजे के थे यार। भाई बहुत क्या मजा याद आया। कर रहे हो? साबुन मारता था कचरा रानी पे जो वाइस के ऊपर क्या मतलब भाई, इसको कचरा नानी तूने बना दिया। हेलो यार, वॉइस मेन करता हूँ भाई, ऐसे ना बोलो वॉइस को यार। कचरा रानी मेन क्या बात है यार आप तो गलत बात कर रहे हो यार। आई थिंक स्पीड देखते हैं ओमन क्या करता है। अपना कचरा रानी ओ भाई ओमन ने मुंह पे टिप्पी किया यार। टिप्पी अपना ओमन हाईएस्ट हाई रिवार्ड पे खेल रहा Enemy remaining. यार मिजू डूइंग चैट डेव प्रॉब्ली यार। क्राई बेबी बेबी चुप रही, क्राई बेबी चुप रही है। क्राई बेबी क्या कर पाएगा यार तू यार विनेबल 1v4 हो सकता है यार। आई स्पॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल, कहते नहीं होते एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओ ले No भाग जा अर्जुन वो उसको हंट कर रहे हैं। अर्जुन नबीले कहते नहीं होते, नबीले कहते नहीं होते एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ये वो सीन है। लेकिन वो तो ये वैलोरेंट है लव एंड वार नहीं है। हेट्रेड टॉक्सिसिटी सब कुछ अपने टीममेट्स के ऊपर ही देखो बॉम्ब हो रहे हैं। ओ क्या रहते हो बाबू को यार डेडलॉक भाई काम है, काम है भाई काम काम है इसको भी सेफगार्ड की जरूरत है यार। ब्रो आई यूज डेटॉल साबुन, आई डोंट यूज सेफगार्ड एनीमोर। माजरत, पानी इस्तेमाल करते हो डिटॉल का? डेटॉल का साबुन नहीं होता, डिटॉल का पानी भी होता है। वो नहाओगे ना वो आप ऊपर नहाओगे साथ वो थोड़ा पी लोगे आपका दिल भी साफ हो जाएगा। जो होता है वो पानी है। यस तो आप मतलब कि आप उसी से नहाते हो? यस तू भी मुझे वही आता है निकल आला भुई भुई। यस क्लीन एकदम। ओ Player standing. गो क्रेजी ऐसा गो क्रेजी ओहो Over there. ये तो कुकिंग ज्यादा हो गई। पैम में मार वाइस को कर पाती है कि नहीं? वॉइस तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वॉइस यार ट्राई मुझे को करती हुई वॉइस देखते हैं वो जा रहे कि स्टांस तो क्यों है फिर भी नहीं है। भाई इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। Deadlock pick. नबील को पता है ना, नबील रेडिएंट पहुंचा हुआ यार इससे। क्यों नबील भाई? 11-5 यस, याद है जैसे फनेटिक का वो कमबैक हुआ था। 11-4 था शायद। 11-3 थे, 11-3 हाँ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ये भी बट लेट्स सी। जानने के लिए नहीं है। इसी लाइफ पे लीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। जैसे कहता नहीं होता जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, बट हम आपको इसी लाइफ में बताएंगे कौन जीतेगा कि कौन नहीं। Coldsnap है। अच्छा कौन यार मैच ना राउंड खत्म होता है ना तो पॉज कर दो टाइमर पॉज करके कहो कि जो मीजू के अकाउंट से है ना वो जरा अनटाइटल एंटरटेनमेंट में आए ओके Here. और डिस्कनेक्ट ना हो इस दौरान कोई, Lock in sight. फिर फौरन आए। स्प्लिट पे कर दी थी। ओके पॉज कर लोगे? ओके करंट जा रहा है मेन भाई। अभी राउंड चल रहा है। हाँ चैट में लिख दो।
और चैट में लिखना कहना कि जरा जो है ना इस अकाउंट से वो जरा इधर आके वीसी में आए अनटाइटल। ओके देखते हैं टिल्टेड भाई क्या करते हैं इधर। Last player standing. One enemy remaining. ओह ओह ए ओके 12v5 गया, होते मेरा हैं भी और काम हो हम गया, टाइप इसका भी पोज काम ले हो रहे हैं गया। काइंडली। कर दे पॉज कर दे टाइम। Should I play Type some कर। stars in this reality? नबीले चेक करेंगे आ गया इसी में। देख रहा हूँ ओके यार ये जो ओमन के पास नाइफ है बड़ी प्यारी है ये। आरजेक्स हटाना बट टोपी है जो मर्जी को। अच्छा मुझे क्राई बेबी का पसंद है नाइफ कुरुना में Cry- ड्राइव भी का वो भी ओपी है बट आरजेक्स लव है कहे यार। यार फौरन आओ इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। मैंने चैट में लिख दिया है। जो काम इन एडमिन वीसी सस्पिशियस भाई सस्पिशियस। नहीं बट मैंने वो गलती से पार्टी में लिख दिया तो शायद पार्टी लीव कर दी। बट नहीं पार्टी में सारे बैठे हैं। ये मुझे देखना कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ देख के मैं बताना। काइंडली डिस्कनेक्ट कोई नहीं हुआ इस टाइम। जैसे ही कोई डिस्कनेक्ट होगा ना वो भी बता देना मुझे। लो मिर्जा भाई कुरुनामी भी प्यारी। ये बात तो लाती बोली है ना डिस्कनेक्ट ना है तो ये देखते रह तुम लोगों को शो होगा कि कोई डीसी हुआ ही नहीं और मैंने फास्ट भी लिखा है। रिवर नाइफ प्यारी है रिवर नाइफ ओपी रिवर नाइफ भाई। नहीं क्राम्बिट है यार। जी आई नहीं अभी तक नहीं आया कोई भी। डीसी भी नहीं कोई हुआ। प्लीज भाई इनको माइनक्राफ्ट की स्वॉर्ड लानी चाहिए एज अ नाइफ है। ओह हाँ बहुत प्यारा होगा भाई। मजा आएगा फिर यार नाइफ घुमा रहा है पिकैक्स यार घुमा रहा है इसके अंदर। लकी है यार। उन्हें कहें यार किस चीज का डिले है इतना तो टाइम ही नहीं लगता सर्वर चेंज करने में। सब पड़ जाओगे। डीएम मेरे भी मीना जी डीएम करें। मीना जी 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 आपको डीएम क्या डीएम करना है? वो कह रहे हैं डीएम मीन। वो शायद कह रहे हैं आप डीएम करें उस समय भी। किसे डीएम करना है मेरे को? जिसका नाम मीजू है ना मैं मीजू से बात कर रहा हूँ इस टाइम। मीजू यार सीधा सीधी सी बात है मिजी को बोलो कि इन गेम्स बात काम करें। पीसी फार मीन पे सीधी सी बात है मिजी को बोलना माइक हाँ आप उससे कंफर्म करें। बेसिकली हमें 2-3 ने मैसेज करके कहा कहते हैं ये मीजू नहीं खेल रही। चलो मीजू नहीं खेल रही लेकिन जिसका कह रहे हैं ना जो खेल रहा है वो नहीं होना चाहिए। 2 मैचेस में नहीं खेल सकता कोई भी प्लेयर। वो कह रही मीना जी को मैसेज भेजा उसने। उन्हें को मोबाइल से आ जाएं सिर्फ मोबाइल से कैमरा ऑन करके मॉनिटर दिखा दें अपना। बल्कि ये भी नहीं सीन है उन्हें बोलना तो पड़ेगा। मिजू का साबुन स्लो है भाई। यही लिख दो नहीं कैन यू कम बोल फ्रॉम यार। मोबाइल एंड लाइव स्क्रीन। हाँ जी
तो मेट कर दिया जाए सो डेडली लाइक स्ट्रीम। मैच पॉइंट वैसे जल्दी खत्म, क्या टाइम हो रहा है वैसे? 1 बज गया। यारों ने कहो ये एक्सट्रीमली सस्पिशियस है, इतना टाइम नहीं लगता इस काम में। कैन यू कम फास्ट? मैं ये लिखता हूँ कैन यू डू इट फास्ट और अ वॉकओवर विल बी गिवन। कैन यू डू नहीं इट मीन भाई ने लिख फास्ट? दो। यू आर डिलेइंग इट, यू आर डिलेइंग द मैच। तो मीन यूएसए से भाई ने होके कहा हैं वो भाई। लिखो। मैंने ये लिख दिया, यू आर डिलेइंग द मैच, ये लिख दिया बस। कैन यू डू इट फास्ट? यार यार वो कह रही, साल मैं क्या लिखूं यहाँ पे? तुम लिखता? मैं ये बोल रहा था मीन भाई ने जो कहा वो लिखो। आप क्या मेरे लिखूं? को स्क्रीनशॉट दे दो वो देख लेते हैं। कैन यू क्या बना? वो मेरे पे क्या यार कह रही, मैंने पोस्ट वो किया है। कह रही है कि एडविन को बुलाएं, मैं एडविन को शेयर कर देती हूँ, अब एडविन रिस्पांस नहीं दे रही। मैंने जी किसी और फीमेल को बुला दिया, हिसाब से पूछ लें अगर वो अवेलेबल है। मैं एडविन को मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे। साहिल वॉइस कॉम्स बंद। मिजो नीचे बैठी हुई वेटिंग में, मीन भाई आप यस काइंडली आप उसी उसको ही चल जाएं, एडमिन्स वगैरह जो आप लोग है कास्टर ना, कास्टर हम यहीं रहते हैं। नहीं नहीं फीमेल जाने वेटिंग में नहीं हो जाएगा। वो मैंने उसको इधर साहिल रिप्लाई वॉइस कर म्यूट है दिया। अपनी? नहीं नहीं वो उन पे तुम लोग बोला करो, वो सेपरेट मीना जी खुद कर लेते हैं चेक उसको। रज़ान भाई। हाँ जी हाँ जी। रिजवान भाई तुसी जो जानो तुसी कर लो। नहीं 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 मीन भाई ठीक यार, रिवर डैगर भी बड़ा प्यारा होता था ये, बहुत चलाए। नहीं तो देखेंगे गेम में डिस्कनेक्ट नहीं हुई बस। डीसी हुआ नहीं हुआ इस टाइम। यार वैसे इस पर सबसे ज्यादा लोटस मैप ही लगा है इस टूर्नामेंट में। भाई वो हैंगआउट में जाके बैठ गई मेरे भाई को लेके ट्राई करते ये ऊपर आई थिंक कुछ आवाज कर नहीं जा रही थी इसलिए मैं भी हाँ क्योंकि फास्टर भी से हाइड है, ज्वाइन नहीं कर सकते। एक सेकंड मीन और भाई को मैं ट्रैक कर देना मीट पर। पॉइंट को मूव कर लेता करता था। हूं। मीन भाई चले गए यार, पैकेट लॉस। ए चल मीन तेरी भाई यार फेवरेट ये मैप कौन सी? आई ये गेस ये देखो मीन एक लड़का मिनट, है यार। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा क्योंकि अरविंद को बुलाओ, एटलीस्ट वहां से पता तो नो चलेगा। आईडिया। मे भी उसने हाँ अकाउंट लॉक इन कराया मेरी हुआ जान है। मैं मैसेज किया है वो रिस्पॉन्स दे रही अब इधर दे क्या रही। करना है? क्या क्या हुआ? मैंने ना वो कह लो कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर ली, उन्होंने अभी स्विच नहीं था किया हुआ। अब कोई लड़का खेल रहा है ग्लासेस वाला ना, यानी कि डिस्कॉर्ड पे कैम कौन सा? उन्होंने स्क्रीन पे स्विच करना था, ठीक है। स्विच करते करते अभी किया नहीं था, अभी फ्रंट कैम आपको पता है जब आप डिस्कॉर्ड मोबाइल से हाँ जी करो तो बाय डिफॉल्ट फ्रंट कैम आता है। अब उसके ग्लासेस शो हो रहे थे, लड़का लड़का यानी कि पता चल रहा है। लिख दूं चैट में डिस्को? अब मैं एरविन को इधर बुला रहा हूँ, मैं राइजन वो को मुझे कहता हूँ। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। राइजन कि रज़ान पे स्ट्रीम म्यूट है या चल रही? चल रही है। ओके। पास अर्जेंट। नहीं तो बिना जी ईसा अगर अवेलेबल रिक्वेस्ट करके देखो। बाबू मेंटल हुआ गेम में भाई। वो लिख रहे हैं, I was trying to make it work, join from phone and cam पे। वैसे जीता गर्ल्स टूर्नामेंट कौन जीता था? राइट नहीं वो can't नहीं share तब can't तो share स्क्रीन mom शेयर कर remembers करके speaking वेरीफाई। is that kind or do you need more proof?
मेरे ख्याल मैं से उन्होंने रिप्लाई माइक नहीं में कर नहीं रहा। बोला था अपना, आई थिंक। मीन भाई यहाँ पे लाइव शो होती है? यार यहाँ पे नहीं, ये लास्ट सस्पिशियस है यार काम। नहीं मीन भाई ये अब चैट में ये चाह रहा है, यहाँ मेरी लाइव तो शो होगी ना सिर्फ यहीं पे। चैट पर ये लाइव देखना मेरी, जी मैं देख रहा हूँ। ये लिखा है इसने। And Discord was not working on PC, was trying to make it work. Joined from phone and cam पे दिखा दिया when we are sitting on TS. मैं ये लिखता हूँ काइंडली वेट, यहाँ इग्नोर कर दूँ। उसे कहें कि जो मैंने देखा है ना, कैम पे देखा है, वो ग्लासेस वाला मेल देखा है मैंने, मुझे नजर आ रहा है, यानी कि इतना भी आंखें धोखा नहीं खाती, नजर आ रहा है कि चैट में वो लिख दो मेल मीना था। जी, हम वेट कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताओ। आप ही पूरा पैराग्राफ लिखो चलो। पैराग्राफ लिखो, मुझे भेज दो, कॉपी पेस्ट ठोक दूँ। अरे सारों के बीच में ना ना बोले, उनमें से किसी एक टीम के प्लेयर को बुला के बोले ना ये बात, जो ज्वाइन कर सकता है। साहिल वॉइस म्यूट कर दे, क्या मैं कहता हूँ। मैं नहीं स्ट्रीम कर रहा, स्ट्रीम रिजॉन पे कह रहे हैं। रिजवान में वॉइस म्यूट कर दे। क्या रखा है, इंटीग्रिटी नजर आनी चाहिए। ओके ओके। उसने रिजवान टाइजन ने बोला इरविन को कॉल किया। अरे सारे इतने बैठे हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं एक और इशू क्या हो सकता है। मेरी आवाज जा रही है स्ट्रीम पे? बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं यार, अक्सर में मिर्जा, वी हैव टू कीप दैट इंटीग्रिटी, वी हैव टू शेयर दैट ऑल द रिजल्ट एंड विद राइट। ओके। अच्छा दूसरा मैं बता क्या कह रहा हूँ, देखो अब मीजू जो है अपना डिस्कॉर्ड किसी और को लॉगिन करवा सकती है मोबाइल से। जी वो ईसा ने सारा कुछ, ये सारी चीजें ईसा ने रिपीट की हैं, कहती हैं कि ये अकाउंट भी स्विच कर सकते हैं, तो काइंडली इस चीज को देखें जरा। ये ईसा ने मैं तब ये बातों के ऊपर हमारा गौर करवाया था लास्ट मैच में, जब एक चीज ये सस्पिशियस हुई थी कि दूसरी टीम के लड़के अकाउंट बदल के, सारी चीजें बदल के यहाँ पे बैठ के एक दूसरे टीम के लिए खेल रहे थे। एरविन ऐशी भाई गायब है ना? मतलब एरविन अभी थोड़ी देर पहले बात तो कर रही थी, मेरा ख्याल है सोने चली गई है। अच्छा ऐशी मुझे मुहिब शाह भी कैट फिशिंग ना, हाँ लमाऊ थी मैं इसी साल में जी अगर किसी लड़के को नहीं जानता कम्युनिटी में। यार मैं को बुलाता हूँ फिर वो यार मैं एक को बुला लूं, लेकिन वो उसमें मीजू के लास्ट फोटो भेजी थी मैंने। नहीं अपना इतना वो है नहीं यार लड़कियों के साथ, सॉरी बॉयज। नहीं तो क्या कहते हैं, रॉयल्टी किसी फीमेल एडमिन को बोल रहा हूँ तो वो आगे वेरीफाई करना है। जी उसे बुला लेकिन लें, कैट को बुला लें, कैट पता नहीं अवेलेबल होगी कि नहीं। क्योंकि फिर मामला जरा ज्यादा सीरियस हो जाना अगर मैंने रॉयल्टी से कोई एडमिन बुला। यूजर एक सेकंड दोस्त से पूछ के यार, दूसरी किसी जा रहा हूँ, ड्रैग कर लेना मुझे, ठीक है। ओके ओके। जिसने मीजू ने वीसी ज्वाइन किया था, मीजू ने माइक खोला था नहीं खोला था? नहीं, तो ये भी सच है। वो रीजनिंग ये है कि उनकी जो मदर है ना वो सो रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं है मसला, वो नहीं है इशू। मैंने ग्लासेस देखे हैं, मैं अंधा तो नहीं हूँ। दूसरी बात नहीं, ठीक है वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि एक बंदा पूरा कैरी कर रहा है, हार्ड कैरी कर रहा है टीम को, और वो कह रहा है वो नॉर्मल कॉम्प पे खेल रहा हूँ। अलग सीन है, अलग नहीं। वो कह रहे हैं टीएस में, टीएस पे ज्वाइंट है सारे। तो फिर अगर टीएस पे बोल पा रहे हैं डिस्कॉर्ड पे नहीं, मैंने यार भी नहीं आ गई तो प्रॉब्लम। एरविन आ गई है? एरविन को आप बता दें सारा। एरविन सिचुएशन ये है, एक मिनट आप इसे बताएं, मैं जरा वो कैट को मना कर दूं। मैंने भी तरफ कैट को मैसेज कर लिया था। मैं बता देता हूँ। अरविंद सिनेरियो ये होगा कि तो कहते हैं मीदो वेरीफाई करना कि मीदो के अकाउंट पे मीदो ही खेल रही है कि नहीं। अच्छा तो वो कह रही है कि वो बेसिकली हमें ना 2-3 मैसेजेस आए हैं, वो कह रहे हैं कि मीजू नहीं खेल रही। चलो हमें वो इशू नहीं है कि मीजू ना खेले, मीजू के अकाउंट पे कोई और खेल सकता है,
अकाउंट शेयर करते ही आपस में, लेकिन हम्म वो कहने वाले ये कह रहे हैं, कहते हैं कि ये ट्रायली खेल रहा है। और ट्रायली का जितना, अब मैंने तो उसे देखा नहीं हुआ, लेकिन जितना हुलिया मुझे ट्रायली ट्रायली का पता है, वो ग्लासेस पहनता है। तो उन्होंने ना थोड़ी देर पहले इधर, ट्रायली मीजू तो ट्रायली से भी अच्छा खेलती है मीना जी। मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी प्लेयर होंगी। हमारा इशू यहाँ पे ये बन रहा है कि ट्रायली जो है ना, वो 2 टीम से नहीं खेल सकता हम्म टूर्नामेंट में। मिजू, मुझे उनके टैलेंट पे शक नहीं है। मैं ट्रायली की इधर बात कर रहा हूँ कि वो, उसे अलाउड नहीं है टूर्नामेंट में 2 अलग अलग टीम से खेलना। तो आप लोगों ने कंफर्म कर लिया है कि वो ट्रायली है? नहीं, बेसिकली जब आए हैं ना, मैंने बुलाया इधर है, तो कैमरा ऑन करते करते ना, आपको पता है मोबाइल से डिस्कॉर्ड का कैमरा जब आप ऑन करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जी वो फ्रंट कैम ऑन करता है। तो जी। अब वो फ्रंट कैम पे मुझे हाफ जो चेहरा है ना, वो नजर आया है, वो ग्लासेस वाले लड़के का नजर आया है। ठीक है, ओ तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनी पड़ी है। अ, मीना जी मैं क्या करूं इस बारे में? मैं व्हाट तब डू यू जब वांट? आपको बुला रहा था ना, वो इसलिए बुला रहा था, इस दौरान जो मिजू की आईडी थी ना, उनसे जिन्होंने कांटेक्ट तो किया, अभी मिजू क्या हो के रहा है? जो भी थे। अभी क्या हुआ? अभी अभी मैच अभी रोका हुआ है हमने लास्ट राउंड पे। मैं फिर से कर लूं उससे या क्या मिजू, कहते हैं? मिजू को आप डिस्कॉर्ड पे कॉल करें चले मैं करती हूँ, रुके। और उसे कहें कि मुझे स्क्रीन दिखाए। और किसी आपने ओके, वेरीफाई करना है कि वो मिजू भी है, यानी फ्रंट बैक कैमरा दोनों ओपन करा के वेरीफाई। हाँ जी, चले मैं उसको दोनों तरफ से वेरीफाई हम करती हूँ। मैं आप टोटली लोगों को आपकी बात पे ही अग्री करेंगे जो आप बात हाँ करेंगे। हाँ, नहीं कोई आप फिक्र ना करें। आई एम जी, ऑब्वियसली गोइंग टू डू। सही है, चले मैं मुझे आती हूँ। ट्रायली लिख रहा है ओके मीना ओके। जी। लाइव जाके जी, पढ़ लें मीना जी, आपको मैं खुद ही चैट पढ़ना है, आप जाके कह रहा है। अ, मिजू आल्सो वेयर ग्लासेस ब्रो। वो ठीक है, वो पहनती होंगी, ग्लासेस पहनती होंगी, लेकिन अब इधर क्योंकि क्वेश्चन रेज हो गया है, तो हमें उसको कंफर्म तो करना है। गेट अलाइव, ओके। बेटा लाइव। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यार कर ट्रायली भाई, सकते हैं। आपको रोजे का बगैर रोजा तो नहीं लग रहा? चेक कर लो। टॉक्सिक वही होता है जो, हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए तुम अब बाहर आ क्योंकि जाओ इन मिले। हमें किसी ने क्वेश्चन कर दिया, तो हमने उसको कंफर्म तो करना है। सही बात डाउट है। सब रेज हो गए तो करना पड़ेगा ब्रो। नबीले बाद आ जा, बिल ना कर। बाद आ जा, तेरे को मैं बल्कि मैं तेरे को यहीं से दे देता है। नबील, तू ना ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, छोड़ दे। नहीं उसने दे हाँ रहा। बस, इजी, डिलीट कर मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव इजी कर सीन दिया। है। चल नबीले शुक्र कर बैन नहीं दिया, रिमूव किया इस बार। यो महीन भाई ब्रो। यार इजी सीन है, इजी सीन। यार गाइस, मैच जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकता है हम ट्राई करेंगे, तो आप काइंडली वेट कीजिए। वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। और ये इसी लाइव में आपको पता चलेगा कौन मैच जीतता है और कौन हारता है। कोई अगला सेशन नहीं होगा। हाँ, एक लास्ट राउंड में ये 2FA लगा सिचुएशन हुआ है बन मैच गई, में। तो माजरत है। वो कोड स्पेशल बंदों के पास है, आपको अगर चाहिए होगा आप डीएम में आ जाना, आपको भी कोड दे देंगे। हुआ पैकेट लॉस टोटल मेरे 2084 टोटल पैकेट लॉस, क्या बात। मैच स्टार्ट हो गया। अच्छा, एडमिन इतना टाइम दे दिया है, ऑफ कोर्स किसी ने लॉगिन करने की ट्राई की होगी। मेक श्योर फॉर दैट। या हम उसी का ध्यान रखें, कोई इधर से डीसी नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं अब? आई एम योर पर्सनल स्पॉट एआई बॉट। तो बिल भाई आप बॉट हो? अभी तो आप कह रहे थे नहीं, आप मैं इधर। नहीं हूँ, ये किसी और का अकाउंट है, मुझे नहीं पता कौन। वो तो हमें पता है। Sorry guys, we have to comply with Riot's rules. And this tournament is being monitored by the Riot officials. यार इसमें पे बने किधर होता है? ओ ये रहा। ये तो वो नहीं लग रहा, वो कैप्टन पैरो शायद आई पैच के साथ। नहीं नहीं, मैंने देखा हुआ है बट देखा हुआ है।
बट वो पीटर पैन का वो जो विलेन नहीं होता, वो वाला लग रहा है सीन इसका, एक आई पैच बना हुआ। इस वक्त मिजू खड़ी हुई है ना, उसके पीछे वाला रूम चेक करें आप। हाँ ऊपर ये यहाँ पे वो बी हो साइड पे भी चेक करा के। किसी गेम का छट छोड़ दो, शांति रखो जरा। क्या ही बात है, आस्त्रा ही हर तरफ आस्त्रा। Fortnite Kid and Mizo is 100% rally because they are talking a lot of time. Of course, someone is trying to cover up them. जी इसलिए हम डाउट क्लियर कर रहे हैं अपना, तो Guess that Pokemon. यहाँ पे भी बनी है। zombie, एक मिनट आई। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ लाइव में जो मैंने नहीं कही, क्या कहते हैं उसको, हाँ 19 रोजे गुजर गए पता भी नहीं चला। भाई यार इसको बैन दो पहले तो। अच्छा भला बंदा होता था फ्लिज भाई। यार आप लोगों ने खुद देखा होगा व्हाट्सएप पे कोई लिखता होगा नहीं 18 रोजे गुजर गए पता भी नहीं चला, चलो मैंने कहा मैं ही बोल देता हूँ, अगले साल का स्केड्यूल कर लो 2026 का। यार सीमन भाई यार टेंशन ना लो, तो आज ही होगा सीमन वन भाई। डीमन वन भाई, डीमन वन को जानते होते हैं, छोटे भाई हैं उनके। ओ माय गॉड जिक्स बिग फैन सर। जिक्स आ गया, जिक्स आ गया। न्यूज़ स्कैंडल हो ये। जिक्स भाई आप सब आपके बाद बस देखो क्या क्या हो रहा है, आप नहीं हो तो। न्यू डिस्कवरी ऑन लोटस मैप। क्या आपको भी इस चीज का इंतजार है कि सच क्या होगा? तो याद नहीं जैसे वो क्राइम पेट्रोल में कहते होते हैं। सीआईडी में जो होता है, अबे सीआईडी दोबारा आ रहा है, उसका दोबारा स्टार्ट हुआ है ना। सीन चल रहा है यहाँ पे। मैं तो सीआईडी मेरी इंस्टाग्राम भरी हुई है सीआईडी से, पता कौन सी मैं छोटे सीआईडी होते बताऊं क्या होता था, मैं किस जिसका वॉइस ओवर किया हुआ। हाँ जी। पढ़ ले ओए मैं बोल सकता। इस स्कैंडल के रिजल्ट के लिए जुड़े रहिए अनटाइटल के साथ। अच्छा उस्ताद पता छोटे तो मैं समझता होता था भाई ये रियल क्राइम है, ये सारा रिकॉर्ड है। ओके 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 लीव इट एवरीथिंग, लेट्स ये चैट में पेस्ट कर दो। Isn't it if it was me they wouldn't be this scared to these random shit। यार वो भी बात आपकी ठीक है, तो हमने भी तो डाउट क्लियर करना है इसलिए। फोर्टनाइट मुझे समझ आ गई है, लिखना क्या चाहता था फोर्टनाइट डिक्टर। ठीक है। खालिद फ्रॉम राइट इज देयर। कंट्रोल यार, कंट्रोल थोड़ा ध्यान। एक मिनट हम कंप्लाई कर रहे हैं मीजू के साथ, तो रिजल्ट्स जो होगा देखा जाएगा। जानने के लिए हमारे साथ इसी लाइव में रहिएगा। देखो हम इसलिए इसको कर रहे हैं अभी एट दिस स्टेज के, ताकि इन फ्यूचर अगर लेट्स से के इस तरह की बात बनती है तो हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि नहीं भाई आप लोग गलत हो, हमने उस वक्त ऑन द स्पॉट चेक किया था, जो कि अच्छा वही बंदा के रजिस्टर्ड था। गोस्टी भाई फाइनल बताऊं क्या करना है, सारों से लाइव करवा लेना एक बार, क्या कहते हो? किससे? सारों से, सारे प्लेयर से लाइव करवा लेना, यू नो। जुड़े रही हमारे साथ इस स्कैंडल। गाइस सजेशन देते रहो इस जैसे स्कैंडल से बचने के लिए क्या क्या किया जाए, ओपिनियंस दो। कुछ तो गड़बड़ है दिया, तोड़ दें दरवाजा फिर, क्या कहते हो आप? जिक्स बीसी लिखने की उम्र है यहाँ पे, जिक्स मारी जा रही है। हाँ इनका अलग रोमांस चल रहा है चैट में, क्या बात है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पबजी तो वैल्यू में ड्रामे किए जा रहे हैं। मैम आई डोंट नो मैम, डोंट नो मैम। या वही Why I don't know के डबल सॉरी थी। मुझे लगता है शहरी तक बॉयज हम यहीं बैठे हैं, आप भी लाइफ पे हमारे साथ ही रहना, या शहरी यहीं पे होगी। अच्छा यस यू गाइस आर राइट, यू शुड क्लियर योर डाउट्स बट दे आर ऑलरेडी हैव टेकन अप सो मच टाइम। जी बात आपकी ठीक है यार, मिर्जा तो लाइव पे नहीं आ रहा, प्लस दे आर नॉट इवन शोइंग अप फैक्ट। देखिए एडमिन्स क्या करते हैं, हम तो कास्टर हैं,
एडमिन्स पे सारा है अपनी तरफ। लास्ट वैसे नबील की दादी भी ओ नबील यार, नबील की दादी से जाके तो पूछ के भाई कैसा क्या करना चाहिए नबील भाई बताओ। मेरी दादी लेजेंडरी कास्टर थी भाई। छोड़ दो कास्टर को छोड़ो, इस टाइम क्या करना चाहिए हमें इस टाइम। यार? ये कब्रिस्तान जाना फ्लीट्स को चाहिए यार। म्यूट करो यार। यार जिक्स भाई इधर मैं आपको टाइम आउट दे सकता हूँ, ये बात बोले कुछ। डेट बट फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द यार कोर्ट। बट आप हमारी जान तो नहीं देंगे, वरना दे दूंगा। ये भी देख लेना, मीजो और ट्रायले का घर नजदीक नजदीक तो नहीं है ना? अच्छा ईसा, व्हेन आर डेट्स कैजुअल? ऐसा भाई बोल रहे हैं तारीख पे तारीख फ्लिट के तारीख पे बिल्ले को मैसेज तारीख कर। तारीख पे नहीं वो तारीख। कोने में लेट सोया हुआ है इस टाइम बिल्ला यार। इवन साउथ ई लीग यूज मूव मोस हैं। मोस हो आपका एंटी चीट सर। ओके ओके, मुझे नहीं इसका पता था। इलम में इजाफा हुआ आज यार। गाइस मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि नबील की दादी लेजेंड होती थी। लॉस हो गई हमसे हैं। अच्छा ईसा, हमजा रे मेरा गेट दादा भी बैक बड़ा टू लेजेंड स्ट्रीम, होता था। यू वेस्टेड वन होल डे। हैं भाई दादा मेरा अब क्या, दादा भी बड़ा दादा अब लेजेंड कौन होता सी था। गेम खेलता था हैं? दादा जहाजों वाली गेम खेलता था। अच्छा अच्छा, बस 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 समझ गए, उसमें बस बस समझ लगा, आइडिया हो गया हमें तो। सितंबर के महीने में उन्होंने बहुत कुछ किया था। आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीप माय बैड। यार सोना तो बनता है यार, नींद पूरी करनी चाहिए। स्लेव यूएसए से आया हमजा भाई हैं। यार काफी लंबा हो गया यार, लाइक काफी लाइक आई डोंट। क्या सीन है जाके यार, चेक तो करो यार बॉयज। ओ वो मीजो हैंग आउट डिस्कनेक्ट फॉर, हो गया, मीजो डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं ऊपर ऊपर बता के आया। यार मेरा ख्याल है कर दो स्टार्ट मैच, वो ज्यादा। डिस्कनेक्ट हो गया, कौन वो डिस्कनेक्ट डीसी हो हो गया? गया। मिजो डीसी हो गया। आपको डीएम किया, मैंने भी चेक करो। हाँ जी, डीएम तो उसने मुझे किया है कि 1:30 बजे लाइट जाती है। ओके बट वरना मीना जी फिर मेरे ख्याल से लाइट का ही वेट कर रहे मीना थे। जी जी जी। बीसी हुआ है हाँ मिजू। जी, वो उसने मैसेज किया कि 1:30 बजे लाइट जाती है। ये तो अभी ये भी मैसेज झूठ हो कर सकता रहा है है नहीं। हाँ। तब अब क्या करना है? अच्छा इशू इन्हें क्या कल दोबारा होगा मैच? लिख दूं चैट में? ओके मैच एक विल बी। मिनट वेट कर लें, 1 मिनट वेट कर लें, मैं बाकियों से भी पूछ लूँ। हाँ आई जी, गॉट इनका सेंड इट क्या विद करें 5 फिर, कल मिनट्स। दोबारा मैच कराएं? बिना जी बनता तो दोबारा मैच भी नहीं है बट नहीं अब आ तो गया ना, अब उन्होंने भी एंड पे बताया है कि 1:30 बजे लाइट जानी है, उससे पहले हो ही नहीं था। मैं तो अभी एरविन से पूछूं ना, एरविन किधर गई है सबकी? नहीं वो आ सकते थे अगर चाहें तो, वो इतनी जल्दी ज्वाइन कर सकते थे। नहीं मैं बताऊं, एक टाइम बात लिया बताऊं, उन्होंने बहुत। एक छोटा सा केस क्लियर करने के लिए एक बंदा डिस्कॉर्ड ऑन करके अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। अनबिलीवेबल, आधा घंटा जाया कर दिया। समझ में नहीं होगा आता बड़ा सही लाइक। तो बात है, बंदा है। यही तो बोलते हैं। अगर लैग करता है ना मीन भाई, मैं इतना बता दूं, मीजू ने अपना गर्ल्स टूर्नामेंट खेला है, उसमें तो उसने आके स्क्रीन शेयर भी की है, बैठ के खेला भी है। डजंट मेक एनी इधर सेंस क्यों नहीं के। किया? वो कवर वैसे बनता है, वो वार्निंग या वार्निंग देते हैं अभी के लिए, यही हो सकता है। अच्छा ईसा ब्रो, तेरी लूजिंग स्ट्रीक जा पाएगी तो देखता हूँ मैसेज कब किया है। मैंने डीएम देखना। 1:30 बजे वाला कोई स्केड्यूल अभी तक आया तो नहीं। फर्स्ट टाइम सुने। हाँ जी, उन्हें कहें यार रीमैच का कह दें कि कल रीमैच होगा आप लोगों का। अरविंद ने क्या बोला है? वेट का कह रही है। हमें मिजू का कैमरा देखने का कर प्रूव किया जाए। बिना जी मोर इम्पोर्टेंट वो क्या कहते हैं मैनेज वो प्रूफ नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ जी, वो लेट वही हो ना, गया ना, डिले तो उनकी तरफ से ही आया।
हाँ जी, तो तो फिर ये हाँ तो कल नेट के ना उन्हें कह ना दें आप नहीं ना। नहीं नहीं जी, ना हमारा इसमें कोई कसूर है ना नेक्स्ट ओपोनेंट टीम का कोई कसूर है। उन्होंने टाइम अच्छा वेस्ट किया है, इन्होंने अपना क्या कहता है टाइम वेस्ट किया है। कोई इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि इस चीज को प्रूव करना कि वो मीजू है या नहीं है। चलें देख लें फिर इसको ठीक है, आप ये बताएं किस तरह डील करना है। ये प्योर डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। मोर ओवर ये पूरी सिचुएशन में रॉयट्स के साथ, रॉयट वालों के साथ हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो भी वो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे वो हम चलो शेयर ये करते तो हैं This, information के साथ। mean by this situation took us around 25 minutes to deal with this situation and is still not resolved. So technically, 5 मिनट the का soundbite is right. +1। ठीक है जैसे बेहतर समझ। +1 लेकिन मैच टर्मिनेट हो गया, अपडेट आपको वो सर्वर में मिल जाएगी। लिख दें मैच हैज बीन टर्मिनेटेड। हाँ, क्या कर टर्मिनेटेड, अपडेट will be Bill Zuckerberg. provided in Yes, yes. server। Okay. कुछ नहीं. मेरे तो लिख दो ये मैच हैज बीन टर्मिनेटेड, अपडेट हैज will be provided in server। हैं? हेलो हाँ ठीक है. यार मुझे ये बता फिर से कास्टर साउंड वगैरह कुछ चल रहा है कि नहीं? चल रहा। चल रहा है। ओह शिट, ओह नो, अल करेंगे। फ्लिट्जेस किसी से पूछ, स्ट्रीम पे किसी ने स्नोमैन बनाना है मेरे साथ। अच्छा गाइस, आपसे एक चीज पूछनी है कि हमारे एक बहुत बड़े फैन है जिसमें वो कहते हैं डू यू वांट टू बिल्ड अ स्नोमैन, तो वो एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपना, तो काइंडली उनके साथ स्नोमैन जाके बना लें। हमारा सिर खा लिया उन्होंने। स्नोमैन है. यार नबीले चुप क्या नाम है? रपुंजल नाम है, क्या नाम था उसका लड़की का? फिडे मुंह रिपंजल, हेलो फ्रोजन मूवी रिपंजल कहां से आ गई, तुम ये बताओ मुझे। यार मैं मूवी देखता हूँ बच्चों वाली. लो अजीब भाई मैंने साइलेंट कर रहा हूं मैं। फ्लैश अभी 3 दिन पहले टोरेंट से डाउनलोड करके देखी है, पता है? मोना देखो यार, उसमें और वो दरख्त जिंदा हो जाता है. नबीले अच्छा फ्रेम का लाइव मतलब पे क्या है? गालियां फ्रेम सुनेगा तू, चुप फ्रेम कर जा। चुप कर जा भाई तू. वाना बिल्ड अ स्नोमैन, बड़ा प्यारा अभी स्नोमैन कास्टर दूंगा. साउंड, कास्टर हम ऊपर चल जाए अब। हेलो यार हाँ, अब जेटे खिंचले सारन होते बाय बोल छिकले दो, स्ट्रीम वाला को बाय बाय तो बोल दो यार. गाइस, स्ट्रीम कल मिलते हैं चुप बिना कर जा। 12 आउटरो से हम। आउटरो मेरा है, चुप कर जा। अच्छा करो करो करो. गाइस ये कर प्लीज आउटरो लाइक कर दो। सब्सक्राइब प्लीज अच्छा, गाइस कैन प्लीज शेयरिंग प्रूव प्लीज। कर रहे हैं, कह रहे हैं तो अकाउंट शेयरिंग लमाओ यार। ट्रायली भाई, अब शादा डाउट में तो है क्लियर लाभ। तो करना पड़ता है यार। तुम आइट्रो अच्छा दे दे यार, दे दे। हाँ गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज गाइस प्लीज प्लीज गाइस प्लीज प्लीज। भाई वो अनसब्सक्राइब मार के चल जाएंगे जो है पहले। चुप कर यार, तेरी गंदी आवाज सुन के जेड़े को सी ना उन्होंने भी अनसब्सक्राइब कर देता जेड़ा भी। यार आप इधर हेटर बैठे हो, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। शादा है लाभ। ओके, मैं तेरी बेइज्जती कराने के लिए स्पेशल जेटे को कॉल करके उठा के लेके आया हूँ। अच्छा ट्रायली, हाउ डू यू नो एवरी सिंगल डिटेल्स? हाँ, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल ऑन ऑफ द टीम्स। गाइस वो तो आ गया. हमारे यहाँ पे दौरे पड़ते रहते हैं लोगों को। महीन ने भी कहा इट्स टू हार्ड टू स्क्रीन शेयर। देखो क्या होता है, बैड मिस करते हैं हम तो। यार मेरा ना लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है i5 10th जनरेशन, ग्राफिक कार्ड भी नहीं है उसके अंदर। उसके ऊपर भी वैलोरेंट में 60 पे खेल के लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। बल्कि नहीं, i3 है, i3 10th है या i5 है पता नहीं। लाइव अभी भी हो रहा है। चलो चैट को एंगेज रखते हैं, 24 की वॉचिंग आ रही है। और जिक्स भाई क्या हाल है? फ्लिट्स है, फ्लिट्स Sorry है। guys, ये मैच तो टर्मिनेट हो चुका है. एक मिनट, साहिल भाई स्ट्रीम पे कीप स्माइलिंग, टेक केयर. और किसी ने स्नोमैन बनाना है तो बताइए मुझे प्लीज, कांटेक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड। कहाँ से चाहिए आपको स्नोमैन?
नबीले तेरे नाल नहीं एड्रेस भी बता दो यार, वो वहाँ पे आ जाएगी। You heard? Now I'm just saying, when she was accused, did she stream and open the cam at the exact time and was too late for that? Huh? हाँ tell me कंशीरो the भाई truth. हमें कुछ नहीं पता इस चीज का। ओए तू बहस ना करा इधर चैट में। मुझे ऐसे क्यों guys, लग we रहा है are कि not authorized to give our ये opinion. सारी इंग्लिश निकल गई आज। Please refrain आज मैं from अपने पुराने जनरेशन की सारी इंग्लिश बोल दी refrain आज from मैंने। कुछ भी। यार नबील भाई अपनी दादी से तो मिलवाओ यार, बिग फैन। तौबा 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 तौबा, वाह दादी याद अपनी गंदी दादी से बातें मिलवाओ, करना ममनू। ये क्या बात हुई? अच्छा हाँ मैं ही दादी था लोल। इतनी काली दादी। मर्जी है यार। Kenshiro management saw a guy with glasses on cam and she did not saying her mom. मन दादी है तुम्हारी But बिला। on the other hand, they say they are on TS talking. मेरी दादी बात तो सुनो, है कब्र के अंदर है और वो दादी यहाँ पे कमेंट्री कर रही है, क्या बात है? देखो मेरी बात सुनो, it is देखो not यार न्यू ट्रेंड चला practical है to बॉयज। make such assumptions. Please refrain from being बगैरत। यार आपने भाई इंग्लिश में अच्छे ग्रेड मारे, आपकी इंग्लिश इतनी टूटी क्यों है? हेलो उर्दू Bro, बोलो यार shut the अगर। fuck up। मेरा A स्टार था इंग्लिश में, ठीक है? O में भी, A में भी। मेरा A में एक्स्ट्रा था हाँ इंग्लिश। can you यार please मेरी refrain बात from सुनो। using abusive language, Zix my friend? I truly apologize. Sorry. From the एडमिन कौन है? depth of my heart, hello। पूरी नहीं लाइन नहीं आप नहीं, मैं तेरे को सॉरी नहीं करनी। पाजा यार वो जिन्नी तो हेलो सॉरी लग गई ना, खुश रह। यार नबील मेरा पता है मैंने तुझे डीएम किया है। बच्चे का चक्कर इंसान को क्रेजी कर देता है क्रिम्सन गाइस, भाई। रमजान का महीना है, आप लोग अल्लाह तौबा करें, जाके इबादत करें। कहाँ Okay, आप she was लोग talking वेलोरेंट on खेल TS रहे हैं Discord, चल रही नहीं और नहीं इस तो she वाहियात talking the इंसान phone की on आप लोग WhatsApp and बातें सुन Arabic रहे हैं। को तौबा दिखा। तौबा तौबा। देखो अल्लाह जिसे इज्जत दे वो फ्लड्स की भी सुन रहे हैं। वाह जी वाह। यार गाइस आई लव यू यार, मेरी सुन रहे हो यार? इधर कोई नहीं मेरी सुनता यार। अच्छा ट्रायली Go she even sucking showed her face to balls. setup। यार फ्लेट्स यहाँ पे लाइव ही कर दे यार, चैट हम भी साथ पढ़ लें। यार आप लाइव पे जाके देखो, सपोर्ट करो यार हमें, आपके लिए स्पेशल हम ओहो, यहाँ पे लाइव करें। Oh my god. मैं तो साजिद नहीं, मेरी शायद केंशिरो लाइव भाई। फुल सुनो प्ले सुनो में सुनो, चलेगी मजे ना। की बात, Go मजे की quick. बात, मैच She was तीसरे online में on जीते, अभी Discord तीसरे since मैच match started। एक मिनट। That's called fada. She even showed her face plus setup. She was online on Discord since the match started. यार ट्रायली But भाई, on Earth more does she does लमो she is herself immortal। ट्रायली पी भाई के अब मेरी बंदा बात अगले सुने, को मारे तो कोई और है लमो। Anyway अम्मा go मेरी sleep बात आओ, सुने ट्रायली भाई। अच्छा फोन यार नहीं है आपको तो यार किसी ने कुछ कहा ही नहीं। थोड़ा सा चिल हो जाए। जी। इट्स ओके मैन, इट्स ओके। मुझे यार पता है ट्रैली फ्लिट्स की भाई आवाज कानों एडमिन में ने चुभती है। डिसाइड करना है, आप ओके इधर बहस ना करो चैट के साथ। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम दैट माय फ्रेंड। वो देख रही ट्रायली कैंशिरो क्या भाई, कह रहा मैं कहता हूँ उठा के चोक नो स्लैम मारे इस माइक्रोफोन नो। फ्लिट्स को। Lavado. ऑन टाइम पीसी ही नहीं चलता था लेकिन मोबाइल पर चलती। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ऑन टाइम पीसी नहीं अभी चलता था मैं इधर लेकिन मोबाइल दूसरा पे चल मच्छर जाता। दो भी खराब कर रहे हैं। यार मेरी गल सुन जटे, इदा अच्छी गल नहीं होंदी। किथे किथे Shut जा up. इज्जत रख ले यार। ठीक है यार, व्हाट कैन आई से मैन। You cannot say a thing. Shut up. तुर्की आ गई यार है इमाम बेटा। गो भाई। टू हिल एंड गो हाँ वो डाउन जी ब्लडी। रहमान है जी मौलाना। यार ये कौन है रहमान भाई यार? यार ये बिग मौलाना फैन। दोस्त है मेरा हमारे भाई। बहुत अच्छे दोस्त है ये मौलाना पता साहब। ऑन नहीं वही टाइम वाला पीसी मौलाना है या नहीं फिर कोई और लेकिन मौलाना है। मोबाइल हमारे पर चल मिर्जा जाता आई और ही डोंट नो। गैंग है। अच्छा ठीक है, मिर्जा वाला मौलाना है, ठीक है, इन्हें मैं जानदा। ए मैं बहुत पहले जटे इधर नाल खेडदा सी। Yeah, पूछा किसी ने? they are तैनू from मैं दसया भी नहीं, मैं जट्टे तो Netherlands. गल खेडदा। है। वी आर नॉट भैया अक्यूजिंग हर बिकॉज ऑफ हर नहीं गेम आपने प्ले, शी पूछा? इज We are गॉटेड not इवन आई एग्री accusing her बट because of her इट्स gameplay. जस्ट She is It's goated, even I because agree. she didn't But come it's just recent us sunny and she that hurts she me didn't every publish day. it and shared her screen. Mahin that's up to admins to decide, we are just here to talk। उन्हें की कह देता है, उन्हें डायरेक्ट बैन थोड़ी ना मांग लिया है। उन्हें आपका मैं तेनू ओपिनियन मैं दे देता दूंगा कितने तेरा कमेंट 24 घंटे दे दूंगा है। देख तेनू। ऐसे ये बा कुरान के लोग पढ़ रहे हैं ऊपर। यार मेरी बात सुनो, सारे भी अल्लाह अल्लाह करो, जाके इबादत करो। क्या कर रहे हो यार यार स्ट्रीम पे? व्हाट द हेल मैन। आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हो ये बताओ जरा। आप भी बात भाई मतलब मैं तो अभी भाई यहाँ से अभी देखो, अभी बिस्तरे से उठा हूँ। मैं तो सहरी की, इसे मैं शहादत तहज्जुद की मिली है ये क़यादत कर बख्शा रहा गया हूँ। है। अस्तगफिरुल्लाह जटे ख्याल कर। मीजो बहुत अच्छी ना प्लेयर। भाई, नो
नो डाउट भाई, वो तो पता है। Which मैं is a आप लोगों को bucket. मजे की बताऊं, ट्रायली की तो हमने एरविन को वीसी बुलाया, ट्रायली की तो एरविन ने बेइज्जती कर दी थी, कहती मीजू तो ट्रायली से भी अच्छा है। नहीं अच्छी है, Was अच्छा है, मुझे ये तो बता फिर से। hello Zix, आ, hello Zix से नहीं आप यार नहीं वो यार इंस्टेंट वीसी जो है ना वो यार स्विच हो जाए, मेरी क्योंकि आप एक नया बात कट्टा सुनो। खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं आज मैं छुट्टी बता, में जिधर नहीं भी है ना नहीं खुश इसमें, रहे फिलहाल। ओहो कटा नहीं भाई, वो ये सारी बातें गई थी लाइफ पे जटे, क्या हो इस गया? टाइम तुर्की में है या तरक्की में है, आई डोंट नो। कौन से मैं यार तुर्की इस वक्त अनकरा में बैठा हूँ। ये अनकरा गोडो में में है। थी। ईद पे तो आना ही ना क्या? आपने। ईद पे अनकरा में क्या इंशाल्लाह आपने? ईद पर मीटअप करते हैं फिर बॉय। हैं? ये इधर ही है, लाहौर ही है, झूठ बोलता है। हाँ यार, ये क्या था वो जो नहीं, किधर थे रिजवान भाई, एक सेकंड, अपने कैवलरी घर का ही नहीं ग्राउंड, पता सॉरी इसको क्या बात है। कैवलरी ग्राउंड। सब्जादार वाला नाला नहीं है, उधर फिशिंग करने जाता है। तो जटे बड़ा गंदा है, ये रोई नाले में नहाने एरिया ही जाता है, गंदा है। उधर का But the अपना वो है। packets took long for them to check. ये कहता है मैं वहीं से टूना फिश लाऊंगा। Tuna fish. That it took this long for them to check. चेरी बॉम्ब फ्लिट्स फाइन उन्होंने चेक ही नहीं कराया ते ਆਪਾਂ ਕਿੰਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ओनली नो लूना अल्लाह देता। सलीम तौबा Oh, तौबा 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 यार, वो क्या चीज गंदी है मुझे बातें खुद नहीं नहीं पता। करोगी। मैं हमारे भी यहाँ गेम पे बंद कर है दूं अब। हजा पेची, फ्लिट से हजा पेची वाला ਜਿਹੜੇ उससे वो बड़ा अच्छा ਜਿਹੜੇ है। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਨਰਲ ਚੈਟ 'ਚ ਜਾ, ਉਧਰ ਲਿਖ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬੈਨ @UEX फ्रीक ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇ। ओह ओके, ਆਹੋ तू मेनू ही यही समझ लिया बांद्रा। शट अप एंड गो टू हिल। यार गाइस वो आपको नो सर्वर में अपडेट मिल जाएगी, तो फिलहाल के लिए यही सीन है हम। यार प्रोबेबली, अच्छा सर्वर में तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, लेकिन प्रोबेबली स्ट्रीम पे भी अभी शायद मिल ही जाए। ऊपर अभी उमर खान से अलग वीसी में, मैनेजमेंट वीसी में डिस्कस ही कर रहे हैं। वी नीड पता लगे ना डीओ। बिरयानी मंगा ली अभी आप खा रहे होते ऐसे ये थे, रोला यार भूख पाया। फिर लग गई यार, अभी नूडल्स खाए थे यार। डीओ क्या होता है यार? क्या खाए थे? डीओ नूडल्स चिकन फ्लेवर कितने दाने गिन के खाए थे? खाए थे ओए यार, ये तो गलत बात है। जटे बख्श दे, जटे बख्श दे, कोई नहीं, आज आज बख्श दे यार। ओ भाई ओए डीओ करेक्टर है फ्लिट दे, जाहिल इंसान नूबे। डीओ कौन सा करेक्टर है, वो शायद एनिमे का था। तौबा नहीं, तौबा। यहाँ पे वो नया सीन ना क्रिएट करो, छोड़ दो। यार तूने डीओ का नहीं पता तुम लोगों को क्या यार? हाँ हाँ जी, फिक्शनल करेक्टर है मेरे भाई, वो साथ उसका ही एनिमे का। करता रहा वो भी कास्टिंग। क्रिम्सन भाई, जो क्या जो बात है क्रिम्सन भाई आपकी। जो जो बाजार एडवेंचर का है हाँ वो जो का वो मैं कहूँ डीओ उसी का। आयन लेट्स गो, आयन इज ऑन 3 आर नाउ। ये कितने ट्रोल कर दो एक और गेम। कितने बी मेरे रैंक हो ये और बच्चे बैठे हैं एनिमे एंटर। शट अप नूप। तौबा तौबा, शट अप कह दिया। तू फुफोना जटे मैं वाले। नहीं सुन, और ऊपर से वो मैं देख ना नहीं मिर्जा सुनता। चुप है मिर्जा, कोई हाल नहीं। मिर्जा मिर्जे बैठा ही था, मुझे तो ये नहीं पता था। जाने मेरी जाने मन, मिर्जा मिर्जा। ये लो बॉयज, चैट में आपको एडमिन ने आके बता दिया है। ओए एक मिनट, मैं भी देखना है की दस देता है, मैनू नहीं नजर आन दिया। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ चश्मा दिस लगाओ। इशू, ओ गाइस टेंशन नॉट, हमारे गोष्ठी साहब लगे हुए हैं। लगे हुए जेड हैं। भाई यो हेलो हेलो हेलो। गेम प्लेट्स है, प्लेट्स जी जी मेरी जान। मेरी वल मंदी वल बिरयानी। सोवा भी ये जा डाल सकता दे है। तू भी, ये उठा के तू भी डाल दे। मैंने लाइव पे बोल दिया, मैंने कह दी चैट में, वो एडमिन ने बोल दिया तो काइंडली हम उसी पे है। और मेरे पास है नहीं है ना मॉडरेटर, तो तू भी डाल दे। मंदी वल बिरयानी। मंदी वाली बिरयानी थे तो तौबा यार, रेसिज्म डटे, अस्तगफिरुल्लाह। यार मेरी फेवरेट है मंदी, हालांकि मैंने खाई नहीं कभी। मैंने खाई हुई है, मजे की होती है।
किन्नी को खा ली होनी है तू मैं सही तरह खा लेता हूँ। ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਚਾਵਲ ਚੁਗਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੱਟੇ 1.5 ਚਮਚੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਲੀਏ ਦਾ ਦਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਖਾਇਆ ਹਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕरूं। ਦੂਰੋਂ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਕਰ ਬਸ लिट्ज़े जेन्युइन सवाल करूं नहीं चैट में 1 सेकंड लिखने दे। तूने आज इफ्तारी में क्या खाया था? चपेड़े मैंने रोटी खाई थी, फिर पकोड़े खाए, समोसा, फ्रूट चाट। ठंडी सी अच्छा हंस गई मुझे आई बात तूने खा लिए थे मुझे नहीं लगता ये सोंग के काम परा है छोड़ देते सी ना ना बिल्ले ने खाते हैं ये अपना नाम ले रहा नहीं मैंने नहीं खाए थे। लिट्ज़े मेरी गल सुन खाना खुना खाया कर किसी ने तेरे बिल्ले की हट गई ना उसने तुझे पकड़ के मांड देना है और अगर खाना ज्यादा खाना है तो फिर मेरे से आगे चंडे खाया कर नहीं यार चंडे नहीं जट्टे बुरी बात है यार गंदी बातें नहीं कर यार हैं वायलेंस 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 चुप कर जा वायलेंस जट्टे बहुत क्रिंज है ना करें प्लीज मंदी वाला बिरयानी जो बात है भाई बिरयानी हैं बिरयानी भाई बिरयानी नहीं है फोके चोल काले छोले द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड केदा की यार यार वो नहीं जिक्स फ्लीट्स के कलर के बारे में बात करनी व्हाई यू यार क्यों रगड़ा लगा रहा है उसे छोड़ दे जट्टे कोई नहीं मंदी पर बिरयानी मेरी गाल सुन वो ट्रायल यार मेरा जट्टे लग गया और मेरा सिल्वर 3 का रैंक है आई हैड टू गो अल्लाहुम्मा बारक ट्रेली आ सरा रहा है पता नहीं क्या नाम है ट्रोली सिल्वर 3 और नहीं है ट्राली ब्रो क्या हो गया ट्रायली यू लोडी खोतास come on to up okay bro don't talk shit about Lahori okay yeah into sugar no mama tang because ha 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 I am not a Lahori sad life ओए मैं चलो फिर let's go Zakuta bro drag me somewhere oh he's already gone हम दोनों रह गए हैं मेक आउट करते हैं प्लीज भाई क्या बात है क्या करना मैंने गेम बंद कर दिया मेक आउट करते हैं हम दोनों किधर रहते हो वेट हैंग आउट 1 में आएगा हैंग आउट 1
साहल जिंदा हो? हाय। हेलो फ्रिट्स, क्या सीन है मैच का? डिले ही हेलो। है अब। कल ही क्या होगा बाकी। कल ही कल होगा होगा? तब तक। लाइव तो चल रही है अब। देखो क्या होता है। एडमिन्स डिसाइड कर रहे हैं अभी भी। 13 की वॉचिंग है क्या बात। अच्छा वी नीड टू समन लेट मी सोलो हर टू किल मेलिना फॉर रियल। ओके बूढ़ी क्या सीन है आज स्टार्ट होगा या नहीं? हाय बूढ़ी। हेलो। फ्रेंड्स सर मैच क्या कहते हैं हमको बोल रहे हैं मैच यहाँ से कंटिन्यू होगा। वी हैव कंफर्म दैट वो ट्रायल ही नहीं है। तो मैच यहाँ से कंटिन्यू होगा? यहाँ से कंटिन्यू होगा अरे तो एकदम चलेंगे हैं। दोनों हैं। कौन टीम्स कौन को चला दोबारा रहा बुलाना पड़ेगा। सारे लोग सामने चलेंगे लीव कर ऑलमोस्ट। दे जोन पे। है? ये भी ठीक है। रुको रुको। जी। मीन भाई ने बोला था। आज ये कट्टा नहीं खुला खुलेगा कट्टा। I guess Gabe's same guy playing on that stage. So, not even account sharing. Sell invite page. फिर से मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ गेम ऑन करता हूँ। अच्छा नहीं वो रिजवान भाई वाला पार्ट कोड है। बल्कि उसी में आ जाते हैं जो वो नहीं था नहीं नहीं, वो। एक सेकंड नहीं।
वो मैं लाइव दोबारा हो गेम ऑन कर रहा हूँ ना। देखना तो उसी प्रोटोकॉल में अगर मैं जा पाता हूँ। मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड में ऑन कर रहा हूँ। मैच अभी होगा? वही कंटिन्यू होना कह रहे। मतलब कि वो राउंड का वही लेके जाएंगे? 12-5 था। देख रहा हूँ। तो बच गया यार। मैं 100% हो जाएगा।